Assalamu alaikum, everyone. I'm your moderator for the session, Shiri Islam from Fast Canada Alumni Association. ये हमारा follow-up session है for the last presentation done by Mohammed on LinkedIn profile review, and we had a very good response from the last one, and we weren't able to answer all the questions. तो हमने सोचा कि ये follow-up session very important है. आज जो है हम मोस्टली रिव्यू कर रहे होंगे वो प्रोफाइल्स जो हमें लास्ट टाइम शेयर किए गए थे और हम उन्हें नहीं देख सके थे. सो इफ एनीवन एल्स ऑन द कॉल वांट्स टू हैव देयर प्रोफाइल रिव्यूड, प्लीज डू पुट इट इन द चैट एंड विल ट्राई टू गेट टू इट. मेरी आज ये भी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज पुट इट इन चैट और रेज योर हैंड्स, और अदरवाइज कीप योरसेल्फ अनम्यूट. ओके. ऑन आप जो है अगर थोड़ा सा हमें while you are reviewing the profile, आप generally जैसे कि from beginner level, बाज लोगों का question था कि हम we are like students or we are we have a gap in our experience. तो हमारा वो experience इतना ज़्यादा नहीं है. So how should our profile look like? तो अगर थोड़ा सा आप उसको भी touch कर सकें तो it'll be good, because there'll be people who are very experienced, they have a lot to put on their profile, and then there are people who are very beginner level भी होते हैं, या especially those जिनका gap आ चुका है career में. तो उनके लिए जो है क्या चीज बेहतर है. Okay, so without further ado, I'll hand it over to you. Absolutely. Thank you so much, Reen, for setting this follow-up session, and I'm happy to be of any help that I can be as follow-up to our previous conversation. So I have prepared another deck today as well, जिसको हम थोड़ा सा सामने रखेंगे और फिर हम प्रोफाइल की रिव्यूज के अंदर भी जाएंगे. Let me do a screen share and then we can start off. Shireen, can you give me the access to share the screen? Yeah, sure. Sorry about that. Okay, I think you should be able to. Okay. I'll also make you the presenter just to make sure. Okay, let me know when everybody can see the screen. Yes, we can. Okay. Okay. Just a moment, please. Okay, so quickly I would like कि हम session 2 में जाने से पहले ना एक नजर सिर्फ एक quickly like spending just like 3-4 minutes skimming through what we discussed the last time, because obviously a conversation चल रही है, तो if let's say somebody is joining for the first time, पिछला session वो पूरा नहीं सुन सका, तो थोड़ा सा उसको recap भी हो जाएगा. दूसरा ये कि I'm just gonna cover कि हमने कौन-कौन से areas को touch किया था, और बाकी उसके अलावा obviously we're here to answer any questions that anybody have. Let me start off with my introduction for those who did not join who are joining for the first time. My name is Mohammed On. I have been working in the North American markets for over 13 years, primarily working with tech companies and freelancers and agencies, helping them get remote contracts and jobs, helping tech companies get projects. So I've been working heavily on sales side. And this includes the complete process, including like email marketing, LinkedIn prospecting, outbound, inbound, everything included in that. Over the course of last 13 years, I have worked not just in the software development space, but have also developed my own company called Conaxium, which is registered in Texas. And now we're setting up operations in Toronto, inshallah, within 2024 as well. और इसके अलावा I've worked in Gulf markets, I've worked in Amazon space, Amazon FBAs, I've worked in crypto space, doing some trading and mining and stuff like that. So a lot of experience on the sales side. I've also done some tech recruitment for some enterprise level companies. I've done some account management for some enterprise level companies. So I understand the tech landscape around what it takes to get new projects, software development projects, what it takes to get hired in the software development industry. So that should hopefully give you some idea around my experience so far.
If we quickly touch upon what we discussed in our last meeting, I'm just going to cover the bullet points. So, क्योंकि LinkedIn की, YouTube के ऊपर, Instagram, Facebook, हर जगह पर बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है कि आपने जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने LinkedIn को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, रेज्यूमे को क्या करना है. What we are trying to do here is like systematically 2-3 sessions के अंदर हम starting from the most high level all the way, we actually help people set up their LinkedIn profiles in a way so that they can directly get hired in the markets. They don't have to rely on recruiters to help them do that. So that's the objective of it. And then to answer any questions and help you through this journey. So last session में I would strongly advise कि जिस बंदे ने भी ये this is the first time you're joining in, तो please पिछला session की recording मैंने इस deck के अंदर भी डाल दी हुई है और वो fast वाले group के अंदर भी available है. Do take out time to listen to that 1 hour. We've tried to keep it very focused on what really matters in your journey to get hired. Rather than talking about the fluff that typically you see in the videos. So session 1 की ही आगे continuation है. So I'm assuming कि बहुत सारी चीजें जो हमने last time discuss की थी वो people have explored them at least, like banner images कैसे setup करने हैं, jobs पे कैसे apply करना है, interview की एक star methodology बताई थी हमने, गेट कीपर्स को कैसे बाईपास करना है उसके बारे में बताया, ड्यू डिलिजेंस ऑफ कंपनी, हमने इंडस्ट्री को कैसे फिगर आउट करना है, कंपनी की वेबसाइट सर्विसेज देख के जाना है, हमने इंटरव्यू की जेडी पढ़ के जाना है. वो सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने टच किया था इन द लास्ट conversation session 1. So please do take out time to review that if you have not already done that. आज के सेशन के अंदर again I want to keep a very very specific agenda covering like 2-3 different topics. Number one, we're gonna talk about some of the advanced things that we did not touch upon in this session. Number one, like when you're applying to jobs, how do we make sure that we go the extra mile? तो जॉब को हर एक ने अपना रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल तो आई एम अज्यूमिंग कि हर एक का बना हुआ ही होता है और उसने कुछ ना कुछ अपनी हद तक अब रिव्यू और ऑप्टिमाइज भी किया होगा. लेकिन अब हम लेट्स से वी आर स्टिल competing with like for example tens or hundreds of resources. As you know, North American market is getting saturated. तो क्या तरीका हो सकता है कि हम एक्स्ट्रा माइल जाके we stay in front of those recruiters who are hiring for certain positions? And if and beyond that, let's say if we are not getting responses, so what can we do about it? So applying on jobs and going the extra mile is going to be, we're going to spend about like 5 minutes, 7 minutes on that. One of the very interesting thing I want to talk about is probably you know about it. If you don't, I definitely recommend you start using ChatGPT in your journey, and I'm going to show you actually how that works and how easy it can make your job. ठीक है तो and a lot of people don't know about this, so how to use ChatGPT to effectively optimize your profile. Number third area we're going to talk about is how to use Upwork and get some references from there कि हमने अपना प्रोफाइल कैसा करना है. तो हम Upwork को देखेंगे, हम ChatGPT को देखेंगे and we'll try to make sure कि हम अपने profiles को उतना optimize कर दें which can really help us stand out as compared to other candidates in the market. Lastly, हम लोग जो है ना, we have about like I think before this call 12 profiles आ चुके थे. I'm seeing a number of people have sent their profiles right now as well. तो अगर मैं कोई मिस करूँ तो शरीन आप please मुझे help me on this, and I would love to review that profile as well. We'll try to save most time for the profile reviews, because obviously that helps them exactly where the gap area is and how to improve that. So this is the agenda for the conversation. Anything, Shireen, any feedback, anything that you want to incorporate, feel free to suggest, or should I get started? Yeah, please get started and we'll take it along. Okay. Perfect. So before I go to the actual gist of the conversation of today, one quick look at this specific slide. हमने last time भी की थी. I'm not going to go through the whole detail of it. I just want to kind of reiterate one specific thing about it. कि a lot of job recruitment essentially is setting your perspective right, that in the market where there's about 930 million plus users present on LinkedIn, in a market where we have got like 600K plus IT jobs posted in the last 1 month, all we're looking for essentially is one job. I just want to kind of reiterate that and again, just because it's going to help shatter some of the stereotypes कि जी job नहीं मिलती, market बहुत saturated है, काम नहीं मिलता, so on and so forth. And the second thing I want to reiterate is कि it's all about numbers. So if you haven't already applied to 100, 200, 500 jobs already, maybe
you don't even need this session. ठीक है, आप जाएं पहले जाके apply करें. Maybe you already know all of what we are going to discuss, so no need to actually spend hours listening to lengthy webinars when you haven't tried already. So first of all, go to LinkedIn, find your niche, optimize your profile, and start applying to maximum number of jobs, and do that for like 2 weeks, 3 weeks, and see what results you get. Maybe you're going to get interviews right away. It's just a matter of how many jobs you apply to and how targeted you can get. So we talked about the number of applications. जितनी ज़्यादा number of applications होंगी, उतना ही likely है कि आपको positive replies आएंगे. जितने positive replies आएंगे, उतने ही number of interviews के chances हैं आपके setup होने को. जितने ज़्यादा आप interviews देंगे, उतने ही ज़्यादा आपको offers आनी शुरू होंगी और आएंगी. तो if you're stuck at, let's say, not getting offers, try to see how many interviews you've gone through. If you haven't got interviews yet, try to see how many responses you've got. And if you haven't got the responses, try to see how many applications you have applied to. And that will help you really understand where the problem is. And hopefully you can fix those things. Quickly हम चलते हैं इस slide के ऊपर, where I'm going to talk about going extra mile. So I might have touched upon this, but I want to kind of show you this screen as well. Number one, when you're applying to jobs, the most obvious thing is कि जी हमने अपना LinkedIn profile optimize कर लिया है और resume हमने optimize कर लिया. Now we are applying to job, because without doing that, obviously आपको response नहीं मिलेगा. So I'm assuming your profile pictures are there, your banner images are there, your keywords are there, your certifications are in place, your bullet points in your profiles are there, your contact number is Canada or US based, wherever you are, your other things that we discussed in the last session are in place. Beyond that, what we're going to do essentially is we have to create a process of job application. Okay? So what I'm going to show you is, number one, this slide. In case you're not already using that, LinkedIn allows you to set up job alerts. तो हर रोज बैठ के नई तरीके से फिल्टर लगाएंगे तो आप you'll be stuck in a whole ocean of jobs. It's not going to be very helpful. What you can do and should do essentially is set up job alerts. You can look up on videos, and I'm constantly creating on Instagram and LinkedIn. I'm posting multiple. I've already recorded like 60 plus videos talking about sales, talking about tech recruitment. I'm going to be posting over the next few weeks and months. But ये जो जॉब अलर्ट्स हैं, दैट आर वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आपकी डेली का टास्क आपको खुद आएगा. जॉब अलर्ट आपने सेटअप इस तरह करनी है. एक क्विकली कोई भी जॉब अलर्ट लिंक्डइन पे कैसे सेटअप करते हैं, आप उसकी एक वीडियो देखें और अपना कीवर्ड उठाएं. अकाउंट मैनेजर है एंड सेल्स है फॉर मी. कनाडा लोकेशन है. आई पिक द इंडस्ट्रीज जिनसे बिलोंगिंग जॉब्स जब आए तो मुझे इंटीमेशन आए, तो मैंने उनका जॉब अलर्ट सेटअप कर दिया. अब जॉब अलर्ट करता गया कि मुझे हर रोज खुद मैसेज आता है कि ये पिछले 24 आवर्स में मेरे कीवर्ड से रेलेवेंट, मेरी इंडस्ट्री से रेलेवेंट, these 30 jobs have been posted. I just open those 30 jobs and apply on them, so that I don't have to go back and recall, अच्छा मैंने कल क्या फिल्टर्स इस्तेमाल किए थे, अच्छा मैंने किस जॉब पे अप्लाई किया था, किस पे नहीं किया था. ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हल हो जाएंगे अगर आप सिर्फ जॉब अलर्ट सेटअप कर लेंगे. ठीक है. सो जॉब अलर्ट्स प्रीटी सिंपल फीचर है, इसको प्लीज सेटअप करें और इसको यूज करें. सेकेंड थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट एसेंशियली इज कि हम लोगों ने अपनी जो जॉब सर्च करनी है उसको थोड़ा सा फोकस किस तरह बनाना है. सो वी स्पोक ब्रीफली अबाउट इट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू इन वन शॉट, like giving you an idea of what that process looks like. आप LinkedIn के ऊपर जाएं. I belong to sales. मैंने कीवर्ड सेल्स का डाला, मैंने लोकेशन कनाडा डाली. If you're in US, you can put in US wherever you are or where you want to target jobs. Go to jobs and click on past 24 hours. So you only want to apply on those past 24 hours. Initially आपको पिछले पूरे साल की jobs नजर आ रही होंगी. आप you can spend like first 1 week going through last 1 month की पूरी सारी jobs जो हैं उन पे आप apply कर दें. So it will give you an option कि आप past 24 hours भी देख सकते हैं, आप past 1 week देख सकते हैं, आप past 6 months देख सकते हैं, आप past all time देख सकते हैं. So आप past 24 hours को daily basis पे देखेंगे, लेकिन when you're starting off तो आपके पास पूरा एक accumulation of jobs होगा जो कि पीछे से पोस्ट होती आई हैं पिछले मंथ्स में. तो उन सारियों के ऊपर भी आपको एक दफा फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. सो अप्लाई ऑन दोज एज मेनी एज यू कैन, और वहां से फिर आगे आपको जॉब अलर्ट डेली बेसिस पे आपको जॉब्स खुद पुश करेगा. यू आर गोना अप्लाई ऑन देम. सो ideally speaking, if you're applying on a job within the first 24 hours, the likelihood of getting a response is way more than if 24 hours have gone by. And if you apply within the first 5 to 10 minutes, when there's like less than 10
when there's less than 10 applicants, the chances are very high, obviously. Secondly, you can go to Easy Apply. Easy Apply is a very commonly used feature. Easy Apply allows you to click on apply on a job within like 2 to 3 clicks. So आपकी वो templates set up हुई होती हैं, you apply on them. And then you can select your industry. Let's say, for example, if you're a software developer who has worked with retail companies like Walmart है, मैं Walmart type companies का काम करता हूँ, you can pick your industry and say कि अच्छा मुझे Walmart से relevant .NET की jobs दिखाओ जो last 24 hours में आई और उन्हीं पे apply करें. So what that gonna do is essentially laser focus your list to only those jobs जो आपसे relevant है, so that you don't have to kind of swim all through the ocean looking for the type of jobs that are relevant to you. So if you click on the right industry, if you click on the jobs posted in the last 24 hours, you click on the you select those keywords like आपका .NET Java जो भी आपकी technology stack है, and you'll notice कि आपकी अगर पहले list थी for example 14,000 jobs की, तो अब वो list आ जाएगी like 200 jobs की. So it's way easier to apply like that on jobs. ठीक है? Any questions so far before we can move on from this slide? There are a couple of questions, लेकिन we can cover them later. एक है भी आया है कि what if someone is using Indeed.com profile instead of LinkedIn? And I remember last time you mentioned we should use all channels possible, right? Yes. So Indeed का प्रोफाइल सेटअप जरूर करें, Indeed पे आप अप्लाई करें, बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इनकी प्रोफाइल्स को इंटे यूज नहीं करना. सो यू कैन स्पेंड लाइक 30 minutes, वही जो आपका Indeed का प्रोफाइल है वही डाटा यूज करें. गेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑल्सो सेटअप. ठीक है? सो इट विल जस्ट हेल्प यू लेवरेज इजी अप्लाई मच मोर इजीली अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी तो आपको रिक्रूटर्स खुद भी रीच आउट कर रहे होंगे. अगर आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज नहीं है और आपका Indeed ऑप्टिमाइज्ड है, तो if a recruiter reaches out to you, he comes on your profile. First of all, if he's looking for a keyword, you might not even pop up in the search results. नंबर 2 ये है कि अगर आप लेट्स से आप आ भी जाते हैं वहां पे, तो वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो देखेगा कि यार ये इसमें मुझे वो रेलेवेंट डिटेल नहीं मिली, एंड ही डजंट नो कि एक्चुअल डिटेल इज प्रेजेंट ऑन Indeed, तो ही माइट जस्ट गो अवे. सो व्हाट यू वांट इज कि ये जो सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, नंबर 1 लिंक्डइन है, नंबर 2 Indeed है, नंबर 3 आपके ये कनाडा जॉब बैंक्स हैं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं. आई मीन जितना आप करता जाएंगे उतना अच्छा है, बट फर्स्ट टू नंबर 1 लिंक्डइन एंड Indeed इज कंपल्सरी. नंबर 3 योर ओन प्रोफाइल शुड बी मैचिंग. जो आपने रेज्यूमे अपना डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाया या PDF में बनाया है, वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए जो आपने लिंक्डइन के ऊपर इंफॉर्मेशन डाली हुई है उससे. ये 3 चीजें आपकी एट ऑल गिवन टाइम्स रेडी होनी चाहिए, सो दैट आप रात को किसी टाइम भी उठते हैं, आपको कोई जॉब नजर आती है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इजी अप्लाई, थ्रो अवे योर रेज्यूमे, एंड they'll most likely reach out to you. और एक और Right. सवाल है कि if some of us are based in Pakistan and have a PR, तो उनके लिए क्या guidance है? So before landing, what should they be optimizing on? Okay. तभी Have you got your confirmation of PR? Anybody? yeah, they have PR. They said they have PR. Yes. Okay. So do you have your tickets booked? Like when are you exactly traveling there? So I do have plan for around mid of May. Mid of May. Okay. So mid of May means कि you're about 2 months behind, right? I'm going to tell you from personal experience. Typically, अगर आपकी profile सारी optimized हो, you're going to definitely get responses. People will come on calls and ask you. Number one, अपनी location को आप कनाडा मार्क कर दें. अगर आपने टोरंटो में, मोस्ट लाइकली आप टोरंटो ही मार्क कर दें, क्योंकि टोरंटो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट में आप अगर देखेंगे ना जॉब का स्प्लिट, तो वो टोरंटो एरिया में, GTA एरिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं. फिर वैंकूवर में भी हैं, कैलगरी में भी हैं, लेकिन ये कि टोरंटो एरिया हेल्प्स. सो आप एरिया वो मार्क कर दें, and then start on applying those jobs. But just a disclaimer there, when you'll go on interviews, have those interviews, don't tell them upfront that you just got your confirmation of PR. Somewhere in between the interview, what you can tell them, like conversation के बीच में कहीं relevance आती है, okay, when you can start, or can you come to meet us face to face, or where exactly are you based. At that point आपने उनको बताना है कि यार मैंने actually, so good question. Just in the interest of building visibility to you, actually what's happened is that I just got my immigration done. So I'll be actually landing in Canada in the next few weeks. You're still not going to tell them you're going to land in the next 2 months. Don't say that. If you're going to say that,
they're not going to reach out to you. ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि मे बी आप कहेंगे कि यार अब मैं ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन there's two things that you can do. Either you can exactly tell them कि यार अभी मेरा प्लान टेंटेटिव है, मैं कब लैंड होऊंगा मुझे नहीं पता, in which case you'll definitely get not shortlisted. Or you can just say it's tentative, I'm going to travel in the next few weeks, I'm just talking to my travel agent to book the earliest ticket. ठीक है, इन एनी केस इफ यू नोटिस आपकी जॉब के 30 डेज का एक व्हाट यू कॉल इट द नोटिस पीरियड तो होता ही है. एक्चुअली अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में नोटिस पीरियड 3 months के होते हैं, राइट. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम अपफ्रंट कि यार आप यहाँ पर नहीं है, या इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि यार मेरा अभी प्लान फाइनलाइज नहीं है, मैं कब आऊंगा, आप सिंपली उनको कहें कि आई जस्ट गॉट माई कॉन्फर्मेशन ऑफ पीआर, I have the COPR with me, I have the visa stamped with me, I can provide for any type of verification that you need. Number 3, I'm just talking to my travel agent right now and I'm trying to book the earliest ticket, but I'm hoping in the next few weeks I'll be there. वो कहेंगे tentatively क्या आपकी timeline है to reach here? Probably you can say the max you can say is probably in the next 4 weeks. When you're doing immigration, do keep in mind कि इसके अंदर 2-4 हफ्ते का up and down is understandable. But why I'm exactly telling you कि आप यूं इसको अप्रोच करें is because number one, I want कि आप अपनी repo with the HR and recruiters early on build कर लें. ठीक है, even if they don't hire you at this moment because you're not in Canada, they spoke with you let's say for 30 minutes, so they understand कि अच्छा यार इस बंदे they'll recall कि इस बंदे का COPR आया हुआ था and इसने he's going to land in the next few weeks, so probably they'll reach back to you the next time the job is posted, or you can reach out to them when you land there. ठीक है, बट इफ यू अर्ली ऑन टेल देम कि मैं अभी नहीं हूं कनाडा में, तो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. डज दैट आंसर द क्वेश्चन? I think that's pretty comprehensive. Hamza, Imtiaz has raised his hand. Can you please unmute and speak up? So yes, I do have few other questions as well. In the last video, you said that writing on your profile headline that you've got H-1B visa uh, ranks your profile higher, or there are more chances that companies would reach out. So is this the case same with Canada? Like if I write on my profile that I've got COPR, will that enhance my chances? अच्छा, देखें H1B लिखने का फायदा क्यों है, COPR ना लिखने का मकसद क्या है? H1B लिखने का फायदा ये है कि यूएस की जो माइग्रेशन पॉलिसी है ना, वो इट इज एक्सट्रीमली हार्ड. दे हैव अ लॉटरी सिस्टम जिसमें आई डोंट नो लाइक 65,000 एप्लीकेशंस पर ईयर होती हैं, और उसमें से आई डोंट नो कितने लोग, आई थिंक देयर इज लाइक 20% एक्सेप्टेंस रेट. तो गेटिंग इनटू यूएस इज वेरी हार्ड. तो अगर आप H1B होल्डर लिख देंगे तो वहां पर उनको नजर आ जाएगा कि अच्छा यार ही इज वर्क ऑथर, ही वोंट नीड वर्क ऑथराइजेशन. अब COPR अगर आप अपनी प्रोफाइल पे लिख देते हो तो उसका प्रॉब्लम ये है कि COPR का मतलब ये COPR उसी को मिला होता है जो या तो अभी बिल्कुल लैंड नहीं किया, यानी somewhere in his immigration process है. that this might backfire. I would not suggest putting up COPR. हाँ, जब आप वहां लैंड हो जाए आप अपनी लोकेशन को मार्क करें. वो स्पेसिफिकली मैंने H1B के परस्पेक्टिव से बात की थी जो आप जिसको रेफर कर रहे हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि COPR को ना मेंशन करें, क्योंकि स्पेशली इफ यू हैवंट लैंडेड देयर. कनाडा के अंदर जो है ना प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स कंपैरेटिवली कम है और बहुत ज्यादा लोग वहां पे इमिग्रेशन लेकर आ रहे हैं. So they already have people available onshore that can start right away. Okay, so that's why somebody who's got COPR and is not at the moment onshore, probably उसको ये चीज इतनी highlight नहीं करनी चाहिए. Some things that you don't want to say. I'm not saying you should lie about anything. I'm just saying not refrain from saying a few things. Okay, thank you. That makes completely sense. I do have another question. In the last video, you mentioned that we do have to write some sort of contact number or contact details. But if we are at the moment residing in Pakistan, we don't have any Canadian phone numbers. So what to do with that? Sure. So Skype के ऊपर I think $3 का या $4 का US का नंबर मिलता है. US के नंबर का आपका फायदा ये, US का और कनाडा का कंट्री कोड एक ही है +1. ठीक है, आपने कंट्री को आप कनाडा का ले लें, US का ले लें, जहां का भी नंबर आपने लेना है +1 से वो स्टार्ट होगा. उस पर आप कॉल्स कर भी सकते हैं टू रिक्रूटर्स, उससे रिक्रूटर्स आपको भी कॉल कर सकते हैं, उस पर आपको मैसेज भी आता है और उस पर आपको वॉइस मैसेज भी आता है. सो आपने अपनी लोकेशन को टोरंटो मार्क कर दिया और आपने स्काइप का नंबर यूज किया, so you're good.
Okay, thank you. That makes a lot of sense. Okay. चलें जी आगे. एक और क्वेश्चन है कि यूएस और कनाडा का रेज्यूमे स्टाइल सेम होगा? इंटरेस्टिंग. सो रेज्यूमे स्टाइल के बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और मुझे बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की चीजें नजर आई हैं उसके अंदर. ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे कनाडा का एक प्रोफाइल दिखाया कि जी कनाडा में सिर्फ चलता ही यही है, कनाडा में और कोई प्रोफाइल का वो ज्यादा नहीं चलता. आई थिंक ग्रुप में भी कहीं शेयर हुआ था प्रो. ऑल्दो दैट टेम्पलेट इज गुड, नथिंग रॉन्ग विद दैट टेम्पलेट. आई जस्ट फील कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मतलब इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है फॉर सॉफ्टवेयर और एटीएस टू नेविगेट रेज्यूमे. ठीक है, अगर उसमें कोई ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं है, लाइक आपका कंट्री कोड अगर वहां पे पाकिस्तान का डला हुआ है, इंडिया का डला हुआ है, कोई नॉन कैनेडियन डला हुआ है, नॉन यूएस डला हुआ है, जहां पर आप अप्लाई करें उसके अलावा डला हुआ है, तो प्रॉब्लम है. ठीक है, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं डला हुआ या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं डला हुआ या आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वो तो ठीक है. हाँ, बुलेट अगर तो इट्स नाइसली फॉर्मेटेड रेज्यूमे जिसके अंदर टाइटल्स डले हुए हैं, और हमने इसको पिछले सेशन में भी इसके ऊपर काफी बात की थी, तो हम मेरे ख्याल के मुताबिक इतना कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए. मैंने आई हैव अप्लाइड on behalf of multiple freelancers in US. I've applied myself in Canada, and for multiple freelancers I've applied on behalf of multiple tech companies in both countries. मुझे कभी कोई इशू ऐसा फेस नहीं हुआ कि मेरे रेज्यूमे टेम्पलेट के अंदर ये रेज्यूमे टेम्पलेट बिल्कुल सही नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोग, अच्छा एक चीज नॉट टू ऐड इज काउंटर इंट्यूटिवली इन कंट्रीज के अंदर यू शुड नॉट ऐड योर पिक्चर. पिक्चर नहीं ऐड की जाती इन रेज्यूमेस. दैट्स जस्ट सम नॉर्म दैट दे हैव देयर. So no need to put up your pictures, and I guess you should be good. All right, Any? let's move on. Okay, so अच्छा, so आगे चलते हैं जी. हम लोगों ने कितना oh my God, we are already past 30 minutes. So let me try to cover this as fast as we can. इसके ऊपर हमने बात कर ली है. I'm going to show you something very interesting on how to optimize your LinkedIn profiles using ChatGPT. ठीक है, so I was looking at a few profiles of project managers. ठीक है, अब a lot of this question comes around. You guys can still see my screen, right? Yes, we can. Yeah, okay. Give me a second. Okay, so I was looking at this. I was looking at this. What you call it? I was looking at a couple of profiles, and basically हुआ क्या कि मैंने कहा कि अच्छा, obviously ये जो बेसिक चीजें हैं कि हमने बैनर इमेज लगाने, पिक्चर लगानी, इसी चीजें कवर कर ली हम लोगों ने. अब सवाल ये आता है कि हमने अपने प्रोफाइल के जो ये सेक्शंस हैं सारे, इनके अंदर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डालनी है, राइट? So you need some how to add effective information which is going to help us stand out from other candidates. तो मैंने so then I thought what should I do? I mean obviously it would take like countless hours कि हम सारी profiles को बैठ के एक एक word को figure out करें. So I tried to explore a few tools, and needless to say ChatGPT was amazing. ठीक है, ChatGPT आप लोगों को पता होगा, सुना तो कम से कम होगा ही if you're working in the IT industry. ChatGPT पे मैं गया, मैंने चुप करके एक टाइटल डाला. I just wrote down, hello ChatGPT, you are my LinkedIn profile optimization consultant. I am a software project manager at a leading software development company in Toronto. मैंने अपनी लोकेशन बता दी. मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर काम करता हूँ, मेरा टाइटल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है. I want you to work as a LinkedIn prompt optimization LinkedIn profile optimization consultant. ठीक है, जैसे prompt engineering को थोड़ा गूगल कर लीजिएगा कि बेसिकली आपने कैसे इन टूल्स को यूज करके आपने अपना काम निकलवाना है. सही है. It took like 2 seconds, and I asked it to give me 30 keywords to use in my LinkedIn profile जो कि मेरी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे. And based on this, it gave me like 30 keywords right away. Software project manager, agile methodology, scrum है, team leadership है, leadership roles बहुत available होते हैं, software development तो obviously है, project manager, stakeholder management. I found this keyword missing in a number of profiles. Product development का बहुत काम है, और प्रोडक्ट डेवलपर्स चाहिए होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए होते हैं, वो कीवर्ड था. एजाइल, रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे यूज कर लें. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ इजी इट इज फॉर यू टू फाइंड रेलेवेंट कीवर्ड्स and optimize your profile. ठीक है, so it's no rocket science. Use these keywords, like it has given me like 30 keywords.
उन कीवर्ड्स को आप यूज करें, अपनी यहाँ पे लोकेशन डालें, अपने कीवर्ड्स डालें, and it's going to give you tons of information जिसको आप रीयूज कर सकते हैं to optimize your LinkedIn profiles. So this is one of the tools that you should definitely explore, और इसके ऊपर आप लोगों को I think काफी ज्यादा मिलेगा क्रॉस फंक्शन। ये अब आप you'll notice कि ये जो आपको चैट जीपीटी रिजल्ट दिखा रहा है ना, ये दिखा इस बेस पे रहा है कि लिंक्डइन के ऊपर let's say there is tons of project management jobs being posted। अब अगर आप मैनुअली बैठ के इन सारी जॉब्स को नेविगेट करते हैं और उसमें से ये कीवर्ड्स को पिक करते हैं, इट्स गोना टेक यू लाइक प्रॉब्ली 2 years, राइट? सो व्हाट इट डिड वाज कि उसने लिंक्डइन के डाटा को जो अवेलेबल है उसको सामने रखा, गूगल के डाटा को सामने रखा, और उसकी बेस के ऊपर आपको ये बता दिया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बेसिकली क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं जो जेडीज में यूज होते हैं। ये कीवर्ड्स अगर आपके 30 पड़े होंगे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर और आपके रेज्यूमे के अंदर, डोंट यू थिंक कि अगले जो लाइक 200 कैंडिडेट्स होंगे उनके मुकाबले में आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टैंड आउट कर जाएगा? सो इट इज जस्ट दैट सिंपल। आप इन कीवर्ड्स को यूज करें, इस प्ले विद दिस। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, पुट इन एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन एंड you'll find ChatGPT to be very effective. Any questions so far before we go on to how to use Upwork to build better profiles? There was a question ki, how different is it like the resume for Europe, which is tying to the previous question, US, Canada, Europe. Is it really different? नो, आई डोंट थिंक इट्स डिफरेंट। मेरे ख्याल लोकेशन के अलावा, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई डिफरेंस है। आईटी इंडस्ट्री स्टेज द सेम। आप अगर कनाडा में काम कर रहे हैं, आप यूएस में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, इफ यू आर अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, यू आर अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, except for the fact that you're in one area you're going to be paid in euros, in one area you're going to be paid in dollars or CADs. There's no other difference. So JDs remain more or less the same. I don't think there's any difference. About going back to the process के कुछ लोगों के पास PR है and they haven't landed. What if their immigration is in progress? So PR, they don't have PR. Can they still apply for any jobs? अच्छा, सो इफ यू डोंट, सो हमने स्पेसिफिकली ना ये सेशन रखा इसलिए था कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में बेस्ड है ना, पहले तो ऑब्जेक्टिव ये है कि दे आर क्लोजेस्ट टू गेटिंग द जॉब्स इन कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका, राइट? सो ऑब्जेक्टिव वाज कि पहले हेल्प दोज लास्ट माइल पीपल गेट अ जॉब। नंबर 2 वाज जिनको COPR मिल चुका है एंड दे आर अबाउट टू लैंड देयर, दे कम सेकंड ऑब्वियसली, क्योंकि वो दे आर नेक्स्ट इन लाइन कि इन द नेक्स्ट 1 month 2 month वो वहां पर होंगे, तो नेचुरली दे आर आल्सो बेटर पोजीशन और समवॉट they can compete with people already within Canada. अब जिन लोगों का प्रोफाइल अभी नहीं है, they are in the pool, they might get an ITA, hopefully they get an ITA as soon as possible. If you don't have an ITA, let me recommend you something. Instead of targeting Canada and US, go for Europe, ठीक है? यूरोप के अंदर रिमोट जॉब्स के ऊपर आप सेम फिल्टर्स यूज करें, सेम जॉब्स पे अप्लाई करें, लेकिन करें यूरोप में। The reason for that is कि जैसे मैंने बताया, H1B US is obviously the biggest IT market, and there's like big players like Tata Consulting, there's Birlasoft, there's like hundreds and thousands of companies competing in that market. ठीक है? So you're not positioned in a favorable way to compete in that market at the moment, at least, right? Canada का ये है कि already they're planning to send out like 485,000 PRs within 2024, same within 2025. So obviously there's so much saturation happening कि if you are still in the pool, probably you're not going to get a good result. इंस्टेड अगर आप यूरोप वाली साइड पे चले जाएं, तो यूरोप में क्या हो रहा है कि नंबर 1 उधर पे टैलेंट अवेलेबल नहीं है, नंबर 2 ऑब्वियसली इकोनॉमीज तो उनकी वहां पर है, नंबर 3 वहां पर लोग इतना अप्लाई नहीं करते क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज इशू आता है, इमिग्रेशन की वहां पे पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, तो वहां से आपको रिमोट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपैरेटिवली ईजियर मिल जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन द कैनेडियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। Very well said. Let's move on. Okay, we're really short on time. Okay, so let's spend like 5 minutes because हमने profiles review actually करनी है, उसके ऊपर हम लोग आना चाहता हूँ मैं। Upwork के ऊपर हम quickly देख लेते हैं जी, Upwork कहाँ से relevant हो गया? So Upwork is relevant because what I want to
kind of really emphasize on is कि Upwork ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर let's say अगर आप .NET डेवलपर हैं, जावा, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक है, there are people present on Upwork who make like millions of dollars, if not million, like hundreds and thousands of dollars from Upwork using the same technology stack, and their profiles and data is available on Upwork. So let's do some quick search and tell you कि यार आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं. Like for example, let's start with like JavaScript. JavaScript का हमने कीवर्ड ढूंढा, हमें एक्चुअली लेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, .NET के ऊपर आ जाते हैं. ओके, सो .NET में आपको यहाँ पर .NET कीवर्ड के अगेंस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से टैलेंट ढूंढना है. You're going to find freelancers who are obviously like yourself. They work on the same technology stacks, except that they are top rated plus. So there must be something that they are doing which is essentially allowing them to make a lot of money. नंबर 2, आपने इधर से फिल्टर क्या उठाना है, आपने फिल्टर उठा के यहाँ पे $60 an hour पे ले जाएं, आप $40 से ऊपर ले जाएं. टिपिकली आपको पता होगा ऑफशोर रेट्स में 25-30 पे लोग अगर assign ho, they're very happy. But if somebody is making like $75 an hour through Upwork, he's made like $200,000 from it, what exactly has he done on his profile? ठीक है, ये information आपको LinkedIn पे available नहीं है कि इनकी earnings क्या है. So you can look at these profiles. Number 1, आपको यहाँ से बहुत idea मिल जाएगा अच्छी तरह कि हमने अपनी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन को किस तरह दिखाना है. अगर मैं एक .NET का सीनियर डेवलपर हूं तो मैंने क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है. सो यू नीड टू रिव्यू ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव हाइलाइटेड. वहां पर उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन अपनी दिखाई हुई है, which and it's going to show you like tons of profiles. तो आप उन profiles को रिव्यू करें. We don't have time for that, so I can't do it at the moment. But ये आपको profiles से खुद पता लग जाएगा कि अच्छा ये बंदा जो हर जॉब में टॉप रेट कर रहा होता है, what exactly has he done on his profile. You just need to copy that. ठीक है, just be a good copycat, copy as much information as you can freely. It's all public information, so don't refrain from copying that. और copy करें LinkedIn और अपने profiles को optimize करें, and there you go. Make sense? Hello? Gigi, yeah, sure it does. Okay, so let's come to quickly the profiles. We've got like 12-15 profiles जिनको हम लोगों ने देखना है. We've got like 15-20 minutes, तो इसको हम quickly देख लेते हैं. Number 1, so I'm just randomly, मैंने जो पिछले डॉक्यूमेंट में और जो कम्युनिकेशन में आए हुए थे मैंने वो सारे ओपन कर लिए. ठीक है, we'll try to spend as much time on these profiles. Number 1 thing that if I look at it from the perspective of a recruiter, so this is Junaid Zaidi. If you're present on the call, feel free to raise a hand so we know that you're here. Acha, look at this profile. So let me review it from a recruiter perspective. So hey, nice to meet you. Let's connect and collaborate. Okay, there's the banner image. I do feel कि इसको अंदर आप इसको optimize कर सकते हैं. How to create a good banner image for a software developer. Search करें YouTube पे, आपको बेतहाशा videos मिल जाएंगी और उनको try to incorporate ताकि आप इसमें कुछ information और डालें which exactly tells them in one go what you do. But what I want to emphasize here is ये जो open to work है, मैंने पिछले सेशन में भी इसके ऊपर बात की थी. This is a double-edged weapon. This might work against you as well. As it does provide visibility कि जी recruiters को पता लगता है you're open to work, but it also gives an impression that you might be jobless. ठीक है, so this be careful around using this. ठीक है. Number 2, I want to show you something on this profile. वो ये थी कि when I was going through this, I was trying to understand. Are you, Junaid, are you on the bridge right now? Okay, so what's happening here is कि मैंने इसको प्रोफाइल को जब रिव्यू किया, so I was like, okay, so this person is the founding software engineer of company called Appla. Okay, but when I look at his last job, like 6 months ago, he was an intern in Playroom, right? I'm telling you exactly how a recruiter views your profile. ठीक है, so if within 6 months उसको नजर आता है कि from an intern आप you moved on as a founding software engineer, it is also fine. अगर आपने like right away आपने अपनी कंपनी बना ली, you want to build that, that's fine. But within 6 months, if you're again open to work and finding a job, that gives an impression that you're maybe
not settled in the career somewhere. And that, if you really look at the profile, तो इससे पीछे अगर आप जाएं तो ये 3 months की इंटर्नशिप थी, इससे पीछे आप जाएं ये भी 3 months की थी, इससे पहले जाए तो 1 साल की थी, इससे पहले जाए 7 months की थी, and there's like 8 experiences before that, right? So all of this information recruiters are looking at, ठीक है, दे वो जो आपकी प्रोफाइल पे आते हैं तो वो यूं ही रिव्यू करते हैं इस चीज को. So यहाँ पर मुझे डिस्क्रिपेंसी नजर आएगी कि क्या हम can we hire this person because 7 months, 1 year, 9 months, 2 years, this is okay, but the 3 months, 2 months. So this is telling me a lot of switches. Okay, this is something that you should look at, or probably inexperiences को यहाँ से remove कर दे. Anything short of 6 months to 8 months, probably 1 साल से नीचे अगर experience किसी कंपनी में उसको mention करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, so that's my feedback on this. Next profile पे आ जाते हैं हम. This is Asim Bashir Bhatti. I think we reviewed this in last profile as well, last conversation as well. इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. इसके ऊपर we had like a lot of conversation around this. Let's look at this profile. Okay, so Rida. So Rida, I was looking at this profile. I think we had a conversation on LinkedIn as well. So इसमें मुझे सब एक चीज नजर आई थी. This is good thing that you put up an image here. One thing that I wanted to mention was कि अगर if you're now in Toronto, this is giving a very good impression that you can probably fit well in a leadership role. You're outgoing, you're communicative. That tells that you're the type of person that they can hire or rely on for in HR specific like team building roles, right? But try to change this picture because it's mentioning Pakistan here. If you're now in Toronto, you can use an image, any image of your office sitting or somewhere where you are in Canada, right? Because that will position you better. Other than that, अगर इसको हम quickly skim कर लें तो engage presents 2 years, 6 months, a reasonable amount of time. You're working as a technical project manager in this company. I would rather break this text into a little bit of bullet points to better stand out, so that you can exactly recruiters in one go can see what you do. Utilizing Scrum methodology directly across functional team of developers and QA professionals throughout delivery life cycle, fostering work environment, validating deliverables. Okay. I think in the interest of time, इसके अंदर basically I would suggest कि सब image को change कर लें, और बाकी ये है कि I think profile looks fine unless you are and you seem to be settled at your job as well. There's like 2.5 years that you've already spent in this company. If you've made some progression, like पहले आप project manager थी, फिर technical project हुई, या पहले software developer थी, अब आप technical project manager हैं, तो try to incorporate those, break this 3-year duration into like if you've got any kind of what you call it, progression, or have developed from one role to the other, तो उसको अंदर incorporate कर लें, try to bring in some bullet points there. One thing again, this is a point that I want to highlight. 10 experiences, this is too much of experiences. Okay, I don't know how much total experience do you have, but if let's say you have like 5-7 years of experience, but you have like 15 jobs given your LinkedIn profile, तो उसको recruiter ने probably go through भी नहीं करना, इतनी detail में वो नहीं जाएगा क्योंकि there's too much of information, right? So अगर 3 months 6 months की कोई job है and you've got like experiences like these जहाँ पे आपने 2.5 साल 3 साल किसी कंपनी में काम किया है, तो इनको highlight करें और 6 months and below वाले jobs को आप बेशक निकाल दें. Intern कहीं पे थी या कोई voluntary work था, feel free to remove that, no issues with that. Okay, so okay, let's look at this profile. Waqas Sharif, Waqas, data professional. Okay, so data engineer, and this is obvious from the title as well. So data professional, this space you can probably use for some other thing. If you're like certified on some cloud or your data engineering में आपने कोई certification की भी है या कोई achievement की भी है, उसको यहाँ probably highlight कर दें, या कोई ऐसी if you're a senior person, you've led teams, कोई अपनी ऐसी image लगा दे जहाँ पे you're at a conference, you're meeting people, so people know that you can be a cultural fit for the organization as well. Open to work पे हम बात कर चुके हैं already. You're based in Calgary in Canada, that's fine. 5 months into a data architect job, looks fine to me. Retirement, multiple applications to reduce operation cost to. Okay, so I think last conversation में भी हम लोगों ने बात की थी numbers को quote करने की. Maybe it's just me because I come from the sales side, but मेरा first of all जब किसी जगह पे मैं जाऊँ ना तो मुझे digits they stand out better और मुझे एकदम से नजर आते हैं.
facilitate the retirement of multiple applications to reduce operation costs by over $2.5 million. Maybe you can highlight this. This is a number. This is a stat which is telling you that you have reduced the cost of a business by $2.5 million. Maybe make it the first line of it instead of putting it the last, because at the end of the day, businesses are profit-making companies and machines. So quoting numbers, statistically proving your results is very important. Maybe highlight it at the start and tell how $2.5 million in saving translated back into technically what did you do? You did an integration, you did some RPA. What did you exactly do that resulted in saving $2.5 million for the business? That is what you want to highlight. So that's there. There's 15 experiences given before that. Again, I don't know how much total experience you have, but preferably if you can focus on those jobs जो कि अब ये 3 months की job है. I think you're self-employed for 7 years. Maybe remove this अगर आप, because you've got like a very decent career going on. यहाँ पे आप किसी कंपनी में हैं 5 महीने से, उससे पहले 3 साल से आप कहीं थे, फिर उससे पहले आप 7 साल आप यहाँ पर self-employed भी हैं, and then you have some jobs as well. So maybe remove the self-employed side, maybe remove anything below 6 months, उसको remove कर दें ताकि experiences summarized हो. 15 experiences would be a little bit too much for a recruiter to be going through. So this is it. Attendee at Time Lenders, as far as I know, this is a workshops company. They do some management and those type of workshops. So maybe this is not an exact experience. इसको remove बेशक आप कर दें, that's fine. बाकी I think the profile is good to go. Okay, I think we've covered this profile. Yeah, apply वही है जिसमें हम लोग ने देखा founding software engineer. Let's look at Aneeb. Okay. It's taking a little bit time. Okay, so give me a second. Can we go over 15 minutes? Shireen, do you think? Yeah, sure. I don't have a problem. Yeah, okay. And whoever can stay online will stay. That's fine. Yeah. Okay, so इस profile को देख लेते हैं. So Kamal is based in Toronto area. Great. Analytics manager, NLP, BI, business analytics. One of the मेरे ख्याल के मुताबिक most highly paid areas जो हैं वो data science के हैं. Natural language processing है आपकी. That's definitely a lot of requirement for that. Business analytics में आप किस पे काम करते हैं? Do you do like Power BI, SSIS, RS? क्या करते हैं exactly? Maybe highlight that in a little bit here, ताकि keywords आपके clear हो जाएं कि आप किन पे काम करते हैं. Again, यहाँ पर I would add a lot of bullet points here. Data analytics में आप, so you're working on Azure and Python. Okay. Maybe add a little bit of bullet points. Analytics में आप data analytics के exactly management आप क्या करते हैं उसमें, किस type के dashboards आप लोग बना रहे हैं, data, what type of data are you analyzing and everything like that. IBM के अगर आपने worked for 3 years in IBM, I would probably put it right here, ex IBM, because that will really stand out. ठीक है, IBM is the type of company you can brag about. And then 7 experiences. You've got certifications of Azure. So write down certified Azure consultant. Write down your ex IBM. Your any other thing that you can brag about, because I don't find a lot of information here. तो वो भी आप यहाँ पे mention कर दें. I think your profile can really stand out. NLP, natural language processing, computer vision, data science, AI, ML, ये तो चीजें हाथों हाथ बिकने वाली हैं. तो आप इनको you can really use these. Again, go to ChatGPT. Predictive analytics में आप exactly क्या करते हैं? Forecasting होती है, फिर predictive analytics होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. उन keywords को use करें in the form of bullet points, and your profile can really rank high. इसी तरह आपने improved automated client service desk solutions using NLP, using VESA, highlighting key value. Yeah, so I think that's about it. इसको probably part-time role अगर है, you're already way past that, so maybe ITU की research associate को mention ना भी करें तो that's fine. ज़मीन में आपने काम किया,
10 months, 4 years, decent experience. I don't think any other issue is there. Let's look at this profile. So this person is at least यहाँ से ये नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान में है. सो अगर आप अप्लाई करें कनाडा में फॉर अ जॉब, अगेन अच्छा मैं सॉरी ये चीज भूल गया था, इसमें आपने जो पीछे बैकग्राउंड इमेज था इसको यू कैन गेट अ बेटर background image as well. ये थोड़ा सा लोडिंग में इशू कर रहा है, बट ये जो इमेज है, इट्स गुड टू हैव अ बैनर इमेज, बट दैट बैनर इमेज इज नॉट टेलिंग मच. ओपन टू वर्क, वी हैव स्पोकन अबाउट इट. ये आपके Pepsi, if you're working with Pepsi, that's fine. No need to mention it. It's with Norbahar Bottling Company. Pepsi itself is a huge company. You no need to mention there. 3 months into there, I'm not sure is this person in Canada. What is exactly he trying to do? If he's looking for a remote job, probably is better off applying to Europe, like I mentioned, instead of into the Canada. Next profile देख लेते हैं हम. एतजाज कामरान. Okay. Profile image, I would probably, this looks a little bit casual for a LinkedIn profile. So it's probably you can change that. Again, banner image is not telling much. It's good to put a banner image, but that should tell something about you as well. So try to put up like some image of yourself or where you are, of some setting, etc. Maybe work on your getting your connections. Data science bachelor student and an entrepreneur. ये थोड़ा entrepreneurship बहुत यूज होता है कीवर्ड, लेकिन it has to sit well with your profile as well. ठीक है, if you're still a student and you're entrepreneur at the same time and you're now looking for a job as well, probably that's not going to get you result. And then you're a co-founder of a company as well. So if you're looking for a job, the profile has to look like you're looking for a job. If you're doing a business, it has to look like you're doing business. ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप देखें. I think इसको it has to be consistent. Are you looking for a job? तो उस लिहाज से बनाएं. इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इट शुड लुक लाइक ए सीईओ's प्रोफाइल, ताकि आप उसको उस तरह से फिर पिच करें. फैसल हारून. फैसल हारून, आई रिमेंबर दिस प्रोफाइल, मैंने इसको रिव्यू किया. सो ही again, मैंने mention किया, it's just me, or I tend to go at numbers the moment I see them. ठीक है, so if you have managed a portfolio of if you're a director of portfolio management and you have managed like portfolio 200 million to 15 million, 200 million and 15 million is a little bit inconsistent. कि आपने 200 मिलियन का किया या 15 मिलियन का, तो बहुत बड़ा गैप है. बट इनको आप ऊपर मेंशन करें. अगर आपने लेट्स से 200 मिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज किया एंड यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो यहाँ पर इन कीवर्ड्स के बजाय आपको यहाँ पर लिखना चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल portfolio manager for financial services company. I was looking at FIS, so this was like a financial company, I think financial services company. So you can write, I'm a portfolio manager for financial services companies. आगे डैश लगाएं और आगे लिखें कि manage portfolios of 200 million plus. Now that keyword itself, that number itself will really highlight who you are and will really set you apart from different candidates. So there's a lot of text, but this information probably I would highlight the most. यहाँ पर हम लोगों ने कोई 10 mm business to analyze. Again, you might want to look at highlight these numbers at start and use some bullet points to break down this information, because that's too much of text in my opinion. Scotia Bank, if you've worked with them, आप यहाँ पे लिखें X Scotia Bank, आप यहाँ पे लिखें X these companies, the large companies that you worked with, and I think your profile should be should be good. Let's look at the next profile. I think ये मेरे पेजेस ना थोड़े से हिल गए हैं, रीलोड हो गए हैं. तो अगर मेरे किसी का मिस कर रहा हूँ प्रोफाइल, तो आप मुझे काइंडली अगर उसमें चैट में मेंशन कर देंगे ना, तो हम विल टेक अ क्विक लुक एट इट. ये आया हुआ है जो मेरे पास अनीब का. अगेन अ लॉट ऑफ पीपल हैव यूज्ड ओपन टू वर्क. I seem to differ on this thing. Okay, इसको use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. But software engineer working remotely, Tensor Labs. God. I wanted to make this more collaborative like last time, जिसमें हम लोग back and forth conversation करते हैं, but time थोड़ा short है, तो हम इसको एक दफा मैं go through कर लूँ, and then we can save like 5-10 minutes. उसमें I can answer any of your questions.
Okay, so software engineer, my name is Aneeb, built and publish functional, beautiful cross-platform applications. Okay, so you're a cross-platform software developer at Folio 3. Folio 3 is a Pakistani company. Are you still working with Folio 3? You're working with them remotely. Okay. 5+ years of React Native and Flutter experience. इसको highlight करें यहाँ पर React Native plus Flutter special obsessed with creating stunning mobile applications. आपका जो background image है ना, mobile application is one thing जो कि really you can show to people. Like somebody who's doing integrations या backend development वो कुछ दिखा नहीं सकता, but mobile application ऐसी चीज़ है जो कि आप दिखा सकते हैं actually, right? तो आप mobile application के यहाँ पे snapshots लगाएं अपने go to Google and find out snapshots like LinkedIn banner image with mobile applications. ठीक है, वो आपको खुद exactly image देगा जो आप यहाँ पर लगाएंगे, so that in one go you look like okay, this is a mobile application developer's profile. The other thing that I want to emphasize is ये 117 connections is way less. If you're looking for a job, you should at least have like 2000 connections in Canada जो कि आपको they can help you connect with different people. क्योंकि your access to recruiters is only possible अगर आप उनके थर्ड डिग्री कनेक्शन, अगर आप उससे बाहर हैं तो उनको आपका प्रोफाइल भी नजर नहीं आ रहा होगा. तो अगर आपके कनेक्शंस म्यूचुअली ऐसे होंगे, द बेस्ट ईजीएस्ट थिंग इज कि आप फास्ट की कम्युनिटी को ऐड करना शुरू कर दें, आप एचआर वाले लोगों को ऐड करना शुरू कर दें, ताकि आपको आपका ये जो एचआर वालों को आप ऐड करेंगे, रिक्रूटर्स को ऐड करेंगे एवरी मंथ, तो आपके प्रोफाइल में यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सेस टू पीपल, जिससे आपका सेकंड थर्ड डिग्री कनेक्शन बढ़ेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई डिड नॉट गेट अ चांस टू हाईलाइट दिस, बट आपको रिक्रूटर्स तभी रीच आउट कर सकते हैं अगर आप उनको विजिबल हो, और विजिबल आपको थर्ड डिग्री कनेक्शन तक ही होते हैं एज फार एज आई नो. तो अगर आपका सब 117 कनेक्शन है, मोस्ट ऑफ देम आर इन पाकिस्तान, चांसेस आर आप रिक्रूटर्स को नजर ही नहीं आ रहे. तो दे शुड बी एबल टू फाइंड यू इन वन सर्च इफ दे लुक फॉर रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स इन कैनेडा. And that will only happen if you've got like at least 2000 connections. So work on the connections a lot. बाकी I think profile में काफी सारी information आपने डाली भी है. Maybe use ChatGPT to optimize it further. I think these are the profiles that I have in front of me. Or profile किसी का है तो Shireen, please share any question. There are actually, if you can open the chat, we have quite a few profiles shared in the chat. Okay, Yeah. let's do that. Let's do that. Josefa, Nadir, and Abdul Ahad. Yeah. If you want to go from the top se agar aap jaye to then maybe we'll not miss someone, because we are going to stay and cover most. I think on your browser is getting slow because you have so many tabs open. Maybe if you can, the profiles that you've reviewed, if you can, close them, maybe it loads quickly. Hello, can everybody hear me? Yeah, sure, we can hear you. तो नहीं, राफेल सही कह रहे हैं, अगर आप थोड़े से टैब्स क्लोज कर लें then it might be speed up for you. हाँ हाँ, मेरे ना असल में ये this is just Chrome. बाकी like there's like 10 other Chrome set up on my computer. But I think the issue is with the internet connection. I might shift my internet connection. अच्छा, इसको देख लेते हैं जी, एक सेकेंड. While we're at it. I'm just shifting my internet connection. Bear with me for a moment.
Technical issues, huh? The computer because it's taking some time. Yeah, no worries. So एक यहाँ पे question है from Merunisa. She's saying she's been in जी. Canada 2 months and she's really struggling with finding a job. तो अगर हम उनका review कर लें. I'm trying to do all of these. Yeah. लेकिन ये ना मैं एक second दे मुझे मैं try let me do that. अच्छा ये चैट जीपीटी का जो रेफरेंस दिया ये आई थिंक आई रियली like that part because frankly I've been using ChatGPT in a lot of other things like in job search के point of view say I never thought that would be good. So I think we should do another session on how to use ChatGPT effectively और कौन से areas में कर सकते हैं. So perhaps that'll be one of the sessions we'll look at in future. Yeah, absolutely. Anytime we can do that. Or just a moment, it's not. Shireen, I'll have to hop off and then I can join back. Just bear with me for like 2-3 minutes, please. Sure, no worries. Oh, okay. So everyone, we are going to be waiting for On to join back. लेकिन in the meantime मुझे आप ये भी पूछना था कि like before the session we didn't realize कि हमें इतने सारे additional profiles मिलेंगे to review. We can do like अगर we don't really get to all of them, we can do a follow up in a week time. So but you need to share your profile beforehand. Okay, sometimes last minute में बहुत मुश्किल हो जाती है for us to cover. We can't really estimate the length of the webinar then. इन और उसके अलावा अगर कोई और भी टॉपिक्स आपके जहन में है विच यू वांट सम गाइडेंस ऑन लेट अस नो. हमारे पास ऑन और उनके अलावा और भी लोग हैं विद इन दी alumni कम्युनिटी जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं. सो प्लीज डू शेयर एनी फीडबैक कि आपको किसी और एरिया के अंदर हेल्प चाहिए हो. We are thinking of doing the next session on the tech services, like how to if you are in the sales of tech services sector, so uske liye what's the best approach to go about that. And I believe this LinkedIn one has been very valuable, but any other areas please do let us know. Hello, can you hear me? Yeah. Sorry, I just hopped on in the middle because I saw some silent space. I was wondering if there is something we can do in a session where you discuss between two conflicting or not even conflicting but remotely related careers, because some people have a varied variety of experiences and they don't seem to figure out, which is my case essentially, as to where to focus, because I'm a psychologist by profession, but my primary experience has been as a psychologist and academic advisor for home and an international university in the UK. So for me, what I'm struggling with is that I cannot practice as a psychologist without licensure, and I cannot wait for that process to commence or culminate before I get a job. So, and because I've also had 5+ years of experience as an academic advisor, I enjoy and find that far more rewarding. So, for people like us who are between two careers, how can we go about deciding which one to stick to or how to find jobs? That's a very good question, and frankly I'm not the best person to answer it. The one thing is today's session is more focused towards IT.
So and आपका बहुत ही different field है. From my experience, like, looking at IT, where we have conflicting issues is that people want, they have been a developer and they have management experience. So if I can relate to the same thing, when they write in a resume looking for a job, they don't really know what field they want to go to. उस वक्त ये होता है कि कोई भी job मिल जाए, कि software developer की मिल जाए या project manager की मिल जाए. But the thing is, the resume has to really speak to what you want. So if you already know as a psychologist you cannot practice right now, then I think you should you should really emphasize the area where you are going to be able to get the job immediately, rather than emphasizing your psychology part, where you know that you it's not going to benefit. So Right. maybe. Thank you. That's probably what I was thinking of. Yeah. Approaching it. Anyone else has a feedback on this? Like, this is my personal experience when I tried to move from being a developer, like, 10 plus years back, when I used to be all in like development, technical, development, dev manager, etc. And I wanted to move into management, like, project management. उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि how, and that's what the recruiter told me, that you're trying to apply to jobs, but your resume says something else. So, and I said, I really want to transition. So he said, try to pick those points from your past career, which will actually show your strength in your future career, rather than trying to list down everything that you did well in the past. Nobody cares about that. So, anyone else on the, forum here who can speak to it? No, I think you pretty much covered it because psychology is a licensed profession. I think except UConn, everybody would want a psychologist to be licensed. But there are other career paths that you can explore, in like counseling, like some level of counselors, they don't require licensing. So just explore those details, and I think you would need to pivot your profile accordingly. Meanwhile, if that's your passion, then explore the licensing process, and it may take some time to get that license, and then you can pivot back to the field. Right. Thank you. Hi, everybody. Sorry for that. No problem. Shireen, I am back, but I can't seem to find anything in the chat now because मैंने quit कर दिया था. I'll make you a co-host. Hold on, and then you'll be able to. Okay. Okay, can you आपको मेरी screen नजर आ रही है? can you see it now? नहीं, so मैंने अपनी screen share की. Are you able to see it? Yeah, we can see your screen. Can you see the chat also? Yes, I can see the chat. अब chat में messages आए हुए हैं. अभी मेरे ख्याल में दोबारा लोग भेजे. पिछली chat नहीं आ रही, लेकिन ये you start with the first two, and I'll keep posting the new ones. Yeah. Okay. We'll just Perfect. repost the old ones. Go on. Okay. अच्छा, so I'm assuming कि मेरी आप लोगों को screen नजर आ रही है. Let's look at Azim Ali. Big data developer. Okay. Big data AWS Toronto. Profile image is fine. Banner image लगा लें. Toronto में, you're based in Toronto. RBC Insurance. Because Royal RBC के साथ आप already working with them. See, अच्छा, so you can optimize this profile a lot. Obviously, क्योंकि आपने bullet points में कुछ भी नहीं add किया. लेकिन my question, I guess, would be कि आप you're already working with RBC. You seem very settled there. आपने so what exactly are you looking for? Are you looking to switch and you're not finding new jobs, or what is happening? Because 9 months here, 4 months here, 3 years here, 4 years, 3 years here. So data to bullet points आपको definitely add करने चाहिए. Big data is obviously a highly paid area. Docker, Kubernetes, all of these technologies are highly paid. If you're AWS, Java, there's a lot of demand for all of these technologies, not just in Canada, but also hugely in US as well.
But if you are working with RBC, if you're looking to switch, then I guess profile optimization to ek cheez hai, but maybe you're not doing a lot of outreach. And I see that your followers are only 1100. So again, probably you're not visible to a lot of recruiters because you're beyond their third degree connection, so they're not able to see you. So that's what I can see. RBC का यहाँ पे थोड़ा सा mention कर दें, big data developer आप exactly क्या चीजें करते हैं, ChatGPT को use करें, Upwork को use करें, and I think the profile should be fine. But the profile seems to have a decent experience in these technologies. अगला profile देख लेते हैं हम. मेहरुन्निसा खाकवानी. Okay, MSc Psychology, student, recruiter, advisor, cross-functional collaboration, conflict resolution, EQ, multi-language psychology. Okay, so this is non-IT. Okay, first disclaimer, most of my experience is in the tech space, so that's it. But are you present on the call? Yes, I am. Okay, so Meher, if you and this goes for everybody, I think I wanted to share this point, but वो मैं नहीं mention कर पाया. अगर आप कनाडा लैंड कर गए हैं, ठीक है, आपने अभी आपकी करंट लोकेशन है कनाडा में ना, ये पिछली सारी लोकेशंस में ना पाकिस्तान और ये रिमूव कर दें, ठीक है, ये इसको एवरीबॉडी, ठीक है, मैं इस पॉइंट को नहीं आइट्रेट कर सका, बाकियों से भी आई होप सारी अभी प्रेजेंट है. तो जो पिछली जॉब्स हैं आपकी वो अब मैटर नहीं करती, आप ऑफशोर थे, आप पाकिस्तान में थे, आप कहाँ थे, ये रिमूव कर दें, आप पाकिस्तान को यहाँ से रिमूव करें. और ये सारे जितनी इस्लामाबाद पाकिस्तान निकाल दें. रिसर्च असिस्टेंट 9 years of experience. ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड, ठीक है, बिकॉज मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑब्वियसली साइकोलॉजी इज अ होल डिफरेंट फील्ड, ठीक है, उसके अंदर आपको दैट्स योर फील्ड, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा चैट जीपीटी को यूज़ करें, मे बी अपवर्क को यूज़ करें, और जेडीज को पढ़ें साइकोलॉजिस्ट की, और जिन्होंने अगर तो दैट्स द एरिया वेयर यू वांट टू फोकस, और इनको करें. दिस कीवर्ड इज नॉट टेलिंग मी अ लॉट ऑफ a lot. Like EQ is like emotional quotient as far as I know, but emotional quotient, what exactly with that? Multilingual, if you're multilingual, do you like speak French? If you don't speak French, frankly English ही है जो दूसरी language इनको चाहिए कनाडा में. So multilingual is probably not something that they want. Conflict resolution is okay, great. Student recruiter and advisor. So what exactly are you looking to do within this field? So, sorry, before you hopped off, actually, while you hopped off, I asked a question. I'm basically a psychologist by education, but my experience primarily lies in student recruitment and advisor. I have worked 4+ years as a psychologist as well, but the problem is for Canada, you need licensure, and I studied in the UK, but it accepts it as a master's degree, but I cannot legally practice as a psychologist without licensure. So because my experience anyways is as an academic advisor for a UK university and a Pakistani college, that's where I'm going with, and that's generally the feedback I'm getting, which is that my profile seems a bit torn and I need to pick a lanes basically. So I think that's basically what I'm taking from this as well. श्योर मुझे समझ आ गई. अच्छा, एक तो चीज़ ये कि नंबर 1 ये आपका भी ना फॉलोअर्स का इशू है, या आपका वो नेटवर्क बहुत शॉर्ट सा है, शुड प्रॉब्ली नॉट विजिबल टू पीपल. सेकंड, अगर तो आप यूनिवर्सिटीज में इफ यू आर अ स्टूडेंट रिक्रूटर एंड एडवाइजर, तो प्रॉब्ली माय गेस इज दैट योर टारगेट मार्केट इज लाइक यूनिवर्सिटीज के साथ आप काम करती हैं, कॉलेजेस के साथ काम करती हैं, करेक्ट? सो आप कैन डू इज कि आप लिंक्डइन पे जाएं, सर्च फिल्टर्स आपको मैंने पिछले सेशन में भी कवर किए थे, लिंक्डइन पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पे आप उसमें से ना यूनिवर्सिटीज के डाटा निकालें, उनके करियर सेक्शंस में अप्लाई करें, उनको सेंड आउट करें कि मैं एमएस साइकोलॉजी हूँ. लेकिन विद द डिस्क्लेमर आई एम टेलिंग यू दिस, माय वाइफ इज अ डेंटिस्ट, सो इन कनाडा दे नीड वो उनकी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है. माय सिस्टर इज अ बिहेवियरल टेक्नीशियन इन केलोना. सो ये दीज फील्ड्स हेल्थ केयर स्पेसिफिक और कुछ खास एरियाज में जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता. you'll have to do something about it. या तो लाइसेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, या फिर So I basically consulted with the School of Psychologists of Ontario, College of Psychologists Ontario, and the process seems possible. Of course, it will take some time. So in the meantime, I do want some employment while I'm supporting myself, because I probably might take a couple of months, a year. I cannot remain unemployed that long, and I also enjoy academic advisor role. So I'm torn a bit in that.
let me suggest you something. Let me suggest you something, and maybe ये आपको help मेरे ख्याल में करनी चाहिए, ठीक है? So you're not exactly from the IT field, right? So I'm going to suggest you something जो कि मैंने और लोगों को they do that excellent, it really works, ठीक है? मैंने ना LinkedIn के ऊपर और थोड़ा YouTube के ऊपर ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है? मैंने बेसिक सी ना कुछ वीडियोस बनाई, आप यू कैन फॉलो माय LinkedIn या Instagram पे देख लें, 1 minute 30 seconds की ना शॉर्ट एडवाइजरी वीडियोस, लाइक whatever your field is, if you're a student advisor, आप उनको करियर से रिलेटेड बताती हैं, उनको मैनेजिंग वर्क स्ट्रेस से रिलेटेड बताती हैं, हाउ टू परस्यू देयर करियर्स बताती हैं, जो भी व्हाटएवर योर एरिया ऑफ फोकस इज, उससे रेलेवेंट ना 1 मिनट 30 सेकंड की ना वीडियोस बना के ना लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दें, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने शुरू कर दें, एंड देन व्हाट यू एंड साथ स्टार्ट एडिंग यूनिवर्सिटी पीपल, लाइक यूनिवर्सिटी के जो एडमिन्स हैं, उनके करियर सेक्शन वाले, उन सारे लोगों को ऐड करें, and then unse have those conversation over LinkedIn, but apply to jobs. These are obviously necessary things, but apart from that, ye post karna shuru kare content. What that's going to do is, there people are going to get to know you in the Canadian market, that she is an academic advisor, yeah, career advisor, and with that content probably you'll be able to get some leads. Second thing that you can do is, and again go to my YouTube channel, you'll see what I do. आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं और यूनिवर्सिटीज़ के करियर सेक्शन में से या उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनमें से लोगों के साथ ना स्टार्ट हैविंग पॉडकास्ट विद देम, उनको कहें कि मैं आई एम स्टूडेंट रिक्रूटर एंड एडवाइजर, और मैंने यहाँ काम किया भाई किंगस्टन यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप मुझे आई वांट इंटरव्यू यू फॉर माय पॉडकास्ट, ठीक है? फर्स्ट 10 पॉडकास्ट विल बी जस्ट फिलर कंटेंट, ठीक है? उसके अंदर मोस्ट आप में बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लाइक बहुत ज़्यादा यू डोंट नीड टू गो विद दिस लाइक द फाउंडिंग पीपल और द पार्टनर्स और द डायरेक्टर्स, किसी से भी यूनिवर्सिटी सेटिंग में ना आप इंटरव्यूज करने शुरू करें, एंड देन पोस्ट दोज ऑन लिंक्डइन, that after 10 episodes now aap aista aista you start increasingly having conversations with those people जो कि decision makers, like your chancellors हैं, directors हैं, faculty के senior लोग हैं, career section के heads हैं, इन लोगों को ना start engaging with them. Very soon you'll realize कि ये बहुत बड़ा एरिया जिसमें अगर आपकी कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आपको मेन अपना करियर नहीं ना परस्यू करने दे रही, तो एटलीस्ट आपको पेरिफरीज में बहुत सारा ऐसा काम मिल जाएगा जिसके लिए आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट की नहीं होगी लाइसेंसिंग की. So that's the best I can suggest for that. Thank you so much. That's incredibly helpful. वेलकम. और ये ना आई वुड सजेस्ट कि ये पाकिस्तान है, ये बिल्कुल हटा दें. एवरीबॉडी शुड, एनीबॉडी हु लैंड्स इन कनाडा हटा दें. यू डोंट नो नीड टू मेंशन कि मैं पिछले 10 साल जो है ना मैं पाकिस्तान में था और अभी यहाँ पर आया हूँ. इफ यू आर इन कनाडा दैट्स व्हाट मैटर्स. यू आर कैनेडियन, you have a PR for there, use that to your advantage. ठीक है, this is very important. Just और दूसरा, before we move in from this profile on, I think one of the session can be you can, now the thing is with the most of the, what I'm seeing is most of the universities are hiring people who for recruitment, so they are giving out recruitment contracts to a lot of people here because they know that they would have these issues with the cap on the international students. So for example, I know a few Pakistanis who are just recruitment consultant for these universities, so you can explore those careers. But what I'm, in addition to what on said, when I look at your profile, and if you can scroll up, when you see, and I see open to work, I cannot actually get what you're trying to do, right? It's project manager, human resource position, scheduler, guidance counselor. So when I look at your profile, the recruiters here are very specific which field you are targeting, right? So I'm not getting that kind of, what are you actually looking for. And regardless of what, even if you want into the recruitment consulting, as on said, you need to make more connections here. With 299 connections, I think no university would say, okay, this person only has 299 connections, why should I hire them as a recruitment consultant? I think that would be my feedback on your profile as well. अच्छा, one other, yeah, one other thing I want to suggest to you. अच्छा, ये ना not a lot of people know about it, but यहाँ पर ना सर्च में अगर आप जाएं तो सर्च में ना आपको लिंक्डइन दिखाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है? सो आप करना क्या है आपने कि आपको इनिशियली ऑब्वियसली अपनी पॉडकास्ट बिल्ड करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है? यहाँ पर ना आप सर्च में अगर जाएंगे आपको मिलेंगे यहाँ पे सर्विसेज,
ये नजर आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन, if you can see it, यहाँ है services, ठीक है. So now I say कि यार career advisory, advisory. Okay, I don't know your keyword, but let's say career advisory, ठीक है. So there's 1100 people that I find, ठीक है. अब मैं लोकेशन कर देता हूँ इनकी कनाडा. ओके, ये मैंने कर दिया लोकेशन कनाडा. ये जो सारे के सारे लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोग 663 पीपल, ये सारे के सारे लोग, एंड यू सी कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, इनको आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकती हैं या आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. इनको ना आप मैसेज करें कि यार मैं भी एक करियर एडवाइजर हूँ और मैंने ना अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट किया, आई वांट टू इंटरव्यू पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज इन दिस एरिया, बिकॉज दिस प्रोवाइड सर्विस. वो आपसे ना आपने उनको ये नहीं कहना आई नीड वर्क, आपने कहना आई वांट टू इंटरव्यू यू बिकॉज आई एम बिल्डिंग अ पॉडकास्ट एंड आई नो दैट यू प्रोवाइड दीज सर्विसेज. They'll be happy to talk to you. Now have 10 podcasts like this and push it out on LinkedIn extensively. And by the time you push out 10 episodes, people will start to know that you are also a service provider. ठीक है. So you can do all of these things to build your community. ये थोड़ी सी आपकी फील्ड क्योंकि डिफरेंट है तो आपको इसको डिफरेंट लेके चलना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. वेलकम जी. अच्छा, नेक्स्ट प्रोफाइल पे आ जाते हैं जी. Where do I get it? मुझे प्रोफाइल कहाँ पे थी शेयर हो रही? जो चैट में if you can Chat में snap it. एक How do I go back? I think you would have to open up the screen, the sharing screen, and then there would be a chat in the bottom. It might be Meetings. showing up on your top of your screen. नहीं, यहाँ भी नहीं शो कर रहा. तो इसकी चैट कहाँ है भाई? एक मिनट है. I think I can, so let's move. I can just give you the URLs. Maybe you can just quickly do those. आपसे दोबारा मैसेज करते हैं मुझे. आई थिंक नोटिफिकेशन आएगी तो खुद ओपन हो जाएगा. ये आ गई, ठीक हो गया. अच्छा, कौन सी प्रोफाइल हमने देखनी थी? अब हमने देख ली मेहरुनिसा की, हमने देखनी है एम उस्मानी. How many still do we have? Oh, okay. Yeah, काफी let's सारी do this quickly. I think we have a bunch still, so let's do अच्छा. it. अच्छा जी. ओके, बैनर इमेजेस पे मुझे काफ़ी है कि बैनर इमेजेस के अंदर ना पीपल आर पुटिंग अप बैनर इमेजेस विच इज़ गुड, बट थोड़ा सा उसमें ऐड करें. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टारगेट हुई हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया है? फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी इज सर्टिफिकेट डेटा साइंस. डेटा साइंस में अगर आपने किया हुआ है काम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पीएमपी किया हुआ है, I don't see a lot of issues with this profile, to be honest. मतलब एक्सेप्ट बैनर इमेज को इम्प्रूव कर लें, 2,500-3,000 इमेजेस हैं आपके, इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. आप डेटा साइंस में काम करते हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं? AIML में कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन में कर रहे हैं, RBC के साथ आप काम कर रहे हैं. यहाँ पर मैं ऑब्वियसली जनरेटिव एआई में काम करता हूँ मैं. आरबीसी के साथ आई जस्ट फिनिश्ड माय कॉन्ट्रैक्ट. इट वाज ओके अ कॉन्ट्रैक्ट बट आई जस्ट फिनिश्ड विद देम. मुझे जो सिर्फ क्वेश्चन है इन ऑल फेयरनेस कि मैंने मतलब इसमें हाइलाइट्स कोई नहीं लिखे हुए. इफ यू लुक एट माय जॉब डिस्क्रिप्शंस, so I haven't put any highlights in there. I've just put in the times. And so I was just thinking कि अगर मैं highlights लिखता हूँ, the reason because I became a contractor a year and a half ago. Okay, I was a portfolio director at TD. तो उसमें issue ये होता है कि if I go for a contract, then people might feel threatened. ठीक है ना? तो वो एक reality है, and I want to basically circumnavigate that. So that's the reason I haven't put it. But I'm more than happy to put it because the work that I've done in generative AI, not many people have done that. I mean, people talk about generative AI, people talk about, using AI, but there are not many use cases that they've used actually. So sorry, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई. You're saying your people would feel threatened with what? Like your If I work? put in, let's say,
in TD, I was actually a portfolio director. Uh-huh. Okay. Uh-huh. But if I put in portfolio director, somebody who's looking at my profile, they'll probably be, and I mean, RBC maybe for working purposes, my title was product and portfolio director. Okay. But I was a contractor. So Okay. उसमें issue होता है कि when I put on a director and somebody who's junior director is interviewing me, okay, they'll reject me there and then because they have a certain image in mind that they think कि यार ये बंदा जो है ना, I cannot go along with that person, too senior to work with. How many total experience कितने आपका सालों का है? 24-ish years. 24 years. Okay. So why do okay. So you're saying that basically wherever you go, you're typically more experienced than anybody who's interviewing you. That's the issue, right? Yeah. हाँ, सो आई थिंक कि एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल सही है, ये बड़ा इशू होता है। आप एक काम करें कि इसने ना आपने 24 इयर्स नहीं, में फॉरगेट दैट यू हैव वर्कड फॉर 24 इयर्स, ठीक है? आपने अपने एक्सपीरियंस को ना टोटल 15 साल कुछ सीधा दिखाना है, ठीक है? और 15 साल में से व्हाट इज मैटरिंग द मोस्ट, अगले आपने जनरेटिव एआई में काम किया है ना, जो चीज आपको लगता है कि यार ये ना मेरा स्वीट स्पॉट है, इसमें मुझे नोबडी कैन बीट मी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है तो दैट्स फाइन, आप एआई में काम करते हैं दैट्स फाइन, व्हाटएवर यू डू, आप उसका एक्सपीरियंस सिर्फ ना बना लें। उसका एक्सपीरियंस आपका लेट से बनता है वो 10-12, हद 15 साल से ऊपर एक्सपीरियंस ना डालें, क्योंकि आपको वाकई में यू विल नोटिस के यू विल बी कम्पीटिंग विद लाइक अदर पीपल वेरी जूनियर टू यू, राइट? तो आप 10-15 साल का ही एक्सपीरियंस इसमें टोटल दिखाएं। एंड नो नीड, आप जो व्हेन यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक पहली जॉब के अलावा कोई जीपीए कभी पूछता भी नहीं है। दूसरे 2-4 जॉब्स हो जाए तो पहले वाला आपके एक्सपीरियंस कोई पूछता भी नहीं है, राइट? तो आप हाँ, तो रीसेंट एक्सपीरियंसेस को डालें, 10-15 साल, 10 मेरे ख्याल में 10-12 साल के एक्सपीरियंस टोटल इसके ऊपर दिखाएं एंड गो इनटू दैट। अगर ऑब्वियसली इट हैज अ काउंट डाउन साइड एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 24 इयर्स की एक्सपीरियंस वाली जॉब होगी तो आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन माय गैस इज 24 इयर्स के एक्सपीरियंस वाली जॉब्स होती बहुत कम है। सो यू आर प्रोबेबली एमिंग फॉर जॉब्स जहाँ पे 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाले ही लोग जाएंगे, वहीं पर ज्यादा जॉब्स होती हैं। इज दैट करेक्ट? True. So I think Salim, I would add something as well because pretty much in the same field, Salim. So I think what one thing that I'm see missing, obviously, On has already mentioned that change the background image because the mountain is not giving the context why it's there, but also in the your actual roles that you have mentioned there, there's no details about what you have achieved at that organization. So for example, RBC, when you look at their there's not much details what you did there. So I think in contract world, most of what I've seen is that they're fine with contractors. They don't care what you have done. They like as long as you're willing to do, simple project management, they should be fine with it. And while I agree that somebody might just get kind of apprehensive or in terms of that, hey, you might take my role. Generally, it doesn't matter. They actually are looking for, all they're looking for is that, hey, you be willing to do the job or not? So I would just say, just work on the description of each job, and also for each like TD and RBC, you don't need to actually mention contract, full time, or just you can just remove that. These are optional things. So just say program manager TD, senior project manager RBC, and when you get to the interview stage you can explain that, but you don't need to mention contract, full time, or permanent full time. That would be my feedback, but then I'll let On finish his thoughts. हाँ जी, ये एब्सोल्युटली राइट। ये ऑप्शनल डिटेल है ना, लाइक आप रिमोट थे, आप हाइब्रिड थे, आप पार्ट टाइम थे, आप कॉन्ट्रैक्ट थे, ये ना सबके लिए ये अक्रॉस द बोर्ड ये ना डाला करें। एंड वो जो पाकिस्तान वाली चीज़ थी उसको रिमूव कर दें। यहाँ पे तो आपने ऑब्वियसली पाकिस्तान को कुछ भी नहीं डाला हुआ। एंड आई थिंक कि वो असल में वो स्वीट स्पॉट आपका वो वही, मैं आई अंडरस्टैंड दैट कि जॉब मार्केट में असल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं हर 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे की। मोस्ट जॉब्स हैं सीनियर लीडरशिप लेवल में, बहुत कम जॉब्स होती हैं, और वो जॉब्स में लोग ज्वाइन जब करते हैं तो वो 5-5, 10-10 साल फिर रहते हैं, तो जॉब एट्रिशन भी कम होती है। तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू टैकल इट बाय टारगेटिंग लाइक a 10-15 year kind of a profile and talking only about what's most relevant. अगला प्रोफाइल देख। वेलकम।
Salim. Okay, this is Abdul Ahad. Okay, Abdul Ahad, are you in Spain? I think he's based in Spain. Yes. So, अभी तो पाकिस्तान में हूँ, but I'm moving to Spain in like 1 month. okay, so so are you looking to target Canada or US for some reason या यूरोप करना चाह रहे हो? नहीं यूरोप. हाँ हाँ, तो ठीक है, यूरोप में आप ये all the option, आप Spain doesn't fall within the Schengen, does it? Yes, it does. इट डज ओके. सो फिर यार आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्री सेलेक्ट करें जर्मनी, कंट्री सेलेक्ट करें ये हैं आप, लाइक गो टू गूगल, फाइंड आउट व्हाट आर द 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द यूरोप, ठीक है, उन 5 कंट्रीज को सिलेक्ट करें, रिमोट जॉब्स, ऑन साइट जॉब्स सब पे अप्लाई करें. आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट रिजल्ट. आपका शेंजन वीजा अगर लगा होगा तो मसला ही कोई नहीं है, मतलब मैं तो आई डोंट सी एनी रीजन यू वुडंट बी एबल टू फाइंड अ जॉब देयर. इन फैक्ट यू कैन स्टार्ट अवे राइट डूइंग दैट. फुल इसको थोड़ा सा और इसमें डाल दें, React, Nest, Next, Node. Are you a principal software engineer? Are you a senior software engineer? Junior software engineer? Total experience आपका कितने साल का है? I'm a junior software engineer. 1 साल जूनियर, बस हुआ. ठीक है. इफ यूर जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई जरूरत नहीं है फिर लिखने की, आप सिंपली लिखेंगे सॉफ्टवेयर. कोई आपने वो की हुई है सर्टिफिकेशन मेरा? हेलो. नहीं मेजर सर्टिफिकेशन कोई नहीं. इफ यू हैव सम टाइम आई वुड से कि कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कर लें, कोर्सेरा से कर लें, आई डोंट नो, कहीं से सर्टिफिकेशन करके ना, सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज, आगे रिएक्ट नोड लिखें और नेस्ट एंड नेक्स्ट एंड व्यू एंड व्हाटएवर यू वर्क ऑन. आई थिंक यू शुड बी एबल टू फाइंड अ जॉब. यूरोप में तो कंपटीशन ही कोई नहीं है. और ये बैनर इमेज वगैरह ना कोई लगा लें, स्पेन का लगा लें, कोई जर्मनी का लगा लें, कोई यूरोपियन लगा लें. आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट वर्क. बाकी आपका ये जो बैनर इमेज है, आई थिंक दिस इज शोगरन बाय द वे, इज इट? But it looks like Canada to me. Yes. Doesn't really, nobody is able to tell. तो ठीक है, बाकी I think that should be fine. आगे देख लेते हैं. Thank you. Welcome. Abdul Ahad Azimi. ये हमने कर नहीं लिया ये वाला प्रोफाइल? I think let's move to Hasib Daniel. हाँ ये कर लिया है हमने. किधर है Hasib Daniel. हुजैफा नासिर का? मैं ऑर्डर में चल रहा हूँ तो एक दफा देख लेते हैं इसको. अहमद रिजवान है, फिर उसके बाद अहमद रिजवान. वन थिंग इज फॉर श्योर, फास्टियंस तो कनाडा में छाए में मैंने देखा है. इतना बंदा बैठा है ना कनाडा में. कम्युनिटी हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी हुई है. अच्छा सिस्टम, आई थिंक आई नो रिजवान. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. सिस्टम एनालिस्ट नेट सोल टेक्नोलॉजीज, आर यू इन कनाडा? Not yet in Pakistan. Right now, I'm in Pakistan, but I already messaged that my immigration is in progress. But I don't know how much time will it take. So that's why I'm looking for opportunities in future. मैं समझ गया, I'm trying to catch the future opportunity. मैं समझ गया. वी नो ईच अदर फ्रॉम इंटेग्लियो राइट? Yes. हाँ हाँ ठीक है, मैं तभी कहूँ, मैं नो यू. अच्छा वो ये जो है ना आपका, आपने हैव यू गॉट द आईटीए फॉर दैट या अभी पूल में ही हो? And I have just started my process, so I am in the pool right now. इन द पूल राइट ना. अच्छा इफ यू आर इन द पूल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कनाडा में अप्लाई ना करें, आप यूरोप की तरफ जाओ. यूरोप में आपको ना रिमोट जॉब्स मिल जाएंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगी, मुश्किल होगा. नेटसोल में आपने काम किया हुआ है, दीज कंपनीज आर लाइक, आई नो यू. एमएस इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्रॉब्ली नॉट रेलेवेंट हियर, क्योंकि आपका 10 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो. योर एक्सपीरियंस इज वे मोर देन, so you don't need degrees to
tell that's your experience, right? ये अगर कोई junior कोई हो या अभी start कर रहा हो तो फिर probably that would make sense. But for you, आपका 10 साल का experience है, आप Azure full stack cloud developer certification कोई किया तो लिख दें certified Azure architect. बाकी ये है कि आई थिंक यूरोप में टारगेट करें, आपको रिप्लाई वहां से मिल जाएगा, यू बी एबल टू गेट रिप्लाईज फ्रॉम देयर. बाकी कुछ बुलेट पॉइंट्स पर यहाँ पे ऐड कर दें. इंटेग्लियो में आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, किस इंडस्ट्री के, कितना वो किया है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू वर्कड विद, उनकी थोड़ी डिटेल ऐड कर दें. आई थिंक शुड बी गुड. ओके, सो थैंक यू. रिजवान अहमद, हुज़ैफा नासिर. जनरेटिव एआई फिनटेक इस्लामाबाद आई थिंक हम रिव्यू कर चुके हैं. ये इसको चेंज कर लें. इट्स नॉट टेलिंग मच. ये जो आपका है ना बैनर इमेज, यू आर नॉट द यूजर, मुझे इट डजंट टेल मी मच. ठीक है, सो इसको चेंज कर लें. बाकी ये आपका डिजाइन सिस्टम इस्लामाबाद. इफ यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, यू आर ट्राइंग टू, इफ यू हैवंट ऑलरेडी गॉट एन आईटी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इनटू कनाडा इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, तो फिर आप कनाडा को टारगेट, यूएस को टारगेट ना करें, आप यूरोप की तरफ जाएं. आई थिंक शुड बी एबल टू गेट इट. बाकी ये है कि आपको यहाँ पर जो है ना, try not to mention too much detail. इस्लामाबाद पाकिस्तान, अगर आपकी वो चीज़ उनसे रेजोनेट नहीं ना कर रही तो उसको try to hide it, try to not mention it, I would say is the thing to say, or rather than saying something जो कि basically उनसे रेजोनेट नहीं करती. तो इस्लामाबाद पाकिस्तान को रिपीट करने का फायदा नहीं है. You can remove it. Probably this is better. London, United Kingdom. अच्छा, दूसरा ये कि लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, जस्ट लंदन वुड suffice या यूके would have sufficed. और बाकी रिमोट लिख दिया आपने, यही लिखे हैं आप. इफ यू वर्क एट दिस कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, आप रिमोट लिख, दैट्स फाइन. ये इस्लामाबाद, इन पाकिस्तान की लोकेशंस को ट्राई नॉट टू बी एक्सप्लिसिटली टॉकिंग अबाउट देम. और बाकी आप यू कैन अप्लाई टू यूरोप साइड एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट सम ट्रैक्शन फ्रॉम देयर. अहमद रिजवान, ये ऑलरेडी कर दी है. इट्स 10. ठीक हो गया. मुनीब एहसन मलिक. Canada. Canada में where exactly are you in Canada? Are you already, have you landed in Canada, Muneeb? Muneeb, if you're not present in the call, if you have landed in Canada, तो better mention कि where exactly. Toronto में तो बहुत अच्छी बात है. PMP certified है, portfolio manager है, ये आपका this looks fine to me. Commonwealth scholar, Imperial College London. Profile seems to be fine. I don't see any issues with that. Bullet points obviously मैं अभी नहीं go through कर रहा, लेकिन ये कि आपके ये जो है what you call them, Imperial College London, Canada, you've got like 2300 connections, which is reasonable. Try to increase that. Bullet points up. You understand ChatGPT is your friend. Washington, US, Islamabad, Pakistan. Total, I'm seeing मेरे ख्याल में कम से कम आपका 10-15 साल का experience है. तो if you've got 10-15 years of experience, maybe Commonwealth scholar would not really tell much about it. You can remove that. PMP certified portfolio project manager, I think is fine. Atlas score 46. Okay. Class of 46. If I'm not coming, I to be honest, I'm not sure what is this exactly telling me. This seems to be some type of an achievement, but I'm not able to tell. Center for Open Data Enterprise Code के host up है. So that's not really telling me much. ठीक है, so maybe you can include some other image that specifically talks about you and your achievements. Baki, I think the profile is fine. You seem to be very experienced. So unless you can point out some issue if you're facing, maybe I can talk about that. I don't see any issues with that. Muneeb Malik, Hassan Zahoor. Results driven business analyst, project manager, Sacramento, California. If you're already in California, results driven business analyst. Results driven business analyst, try to quantify it a little bit. Results driven, what type of results have you achieved?
This doesn't really qualify to me as like a title. Results driven, you have to be results driven, obviously. But what type of results have you achieved is probably something. Certified safe, committed to delivering excellence. These words probably are better suited for about section. Title में आपको exactly ये लिखना चाहिए आप क्या करते हैं exactly. Are you a software developer? If you're a business analyst, are you like cyber security certified? कोई आपने business analysis में कोई certification की हुई है, कोई बहुत बड़ी application के business analyst आप रहे हो, तो वो you can mention of that. Bank of the West में you mentioned maybe थोड़े से bullet points. There's too many bullet points and too much of text still. इसको थोड़ा सा shorten कर लें so that exactly पता लगे what do you do. क्योंकि in one go मुझे ये समझ रहा है business analyst आप हैं, but what type business analyst आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में भी होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर भी होते हैं. आप एग्जैक्टली एज अ बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हो, वो इन बुलेट पॉइंट्स में मुझे लाइक विद इन लाइक फर्स्ट 7 सेकंड्स 5 सेकंड्स मुझे बुलेट पॉइंट्स को देख के पता लग जाना चाहिए. अगेन इफ यू आर इन यूएस या लाहौर वाली सारी लोकेशंस को आप रिमूव कर दें, आई थिंक यू शुड बी गुड. बाकी ये आपने कोई सर्टिफिकेशन में रखी हुई, आपने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, तो आई थिंक वी शुड बी गुड. And then apply to a ton of jobs. I think you should be able to get some traction. Hassan Zahoor, Hamza Imtiaz. Let's look at Hamza. Transforming ideas into digital solutions. I think we are already talking over LinkedIn as well. You haven't really landed in Canada as far as I remember, so it's good you have mentioned Canadian location. Cold Dev, this is your own company, I recall, this Cold Dev, but when I look at Cold Dev, it's like very few people in the company. So agar to aap co-founder hain, so this is, I think we spoke about this in one of the other profiles. If you are a co-founder and you are a business development person and you are a project manager and then you're looking for a job, you'll probably have a hard time finding a job interviews. ठीक है, थोड़ा सा इसको ना tweak करके, even if you're a founder of a company, but if you're looking for a job, बेहतर ये है कि उसको co-founder, founder, CEO वाली चीज को remove करके try to be focused on your LinkedIn profile so that you look like a candidate looking for a job. और बाकी ये आपने transforming ideas into digital solutions, ये मुझे ये बता रहा है कि you have a software development company. If you are looking for a job in business development, तो ये profile का title मुझे ये नहीं बता रहा. ये business development बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी probably अपनी company है. ठीक है, you transform ideas into digital solutions because you are the co-founder of Cold Dev. This is the perception that I am building. तो if you're looking for a job in business development, तो business development का यहाँ पे बना लें. Project management की करें तो project management की फिर बात कर लें. तो try to focus it on one side and really what you want to do. दूसरा ये part time हटा दें, visiting faculty of University of London. If you want to mention it, I think that's fine. बाकी certified, you're also certified on Oracle. So अगर Oracle पे focus आपका है तो यहाँ पे certified Oracle developer लिख दें या जो भी है, so that you can get jobs for Oracle. But I think at this point I'm not sure. Are you looking for a developer job? Are you looking for a business development job? Or are you looking to run a business? इस चीज को थोड़ा सा clear कर लें. Hamza Imtiaz, then we have. So I do have one question. Yes, I do get that I need to remove the co-founder thing. But let's say if I'm looking for jobs in two domains, that is project management and business development. How do I show that? अच्छा, इसका ना या तो आपको दो लिंक्डइन अलग बनाने पड़ेंगे. रेज्यूमेस तो आप ऑब्वियसली दो बना सकते हो, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप दो बना सकते हैं. ऑल्दो लिंक्डइन उसको इस तरह अलाउ नहीं करता, लेकिन वो ब्लॉक भी नहीं करता. तो आपका अगर फोकस है बिजनेस डेवलपमेंट का, तो बिजनेस डेवलपमेंट की मेन प्रोफाइल रखें और दूसरा एक प्रोफाइल बना लें हमजा आय के नाम से. अगर ये आईडी कार्ड पे बनाया है तो उसको आप पासपोर्ट पे बना लें एंड देन यूज दैट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट. ये थोड़ी डुप्लीकेटेड एफर्ट होगी, लेकिन ये आई गेस दैट्स समथिंग दैट you'll have to do. Makes sense. Okay, thank you. I think let's do these two profiles that are shared. I think वो profiles और आई जा रही हैं, so I think we should conclude the session. So I think we are going to end at 2 p.m. So that's about 12 minutes left. So ये दो के अलावा बस अगर कोई बहुत ही important अगर किसी का question है, then otherwise we'll yeah, let's do Amna and Haseeb and then maybe. Okay, so ये एक खुला हुआ है मेरे सामने, इसको पहले देख लें फिर आमना का कर लेते हैं. So open to work, we've spoken about it. This is fine. This looks fine to me. Supply chain and marketing analyst. Okay.
दुबई की जॉब, इफ यू आर इन कनाडा, यार उसको कनाडा बनाए ना, आपने इसको यहाँ पे दुबई ना मेंशन करें, हटा दें इसको, दुबई की सारी जॉब्स हटा दें, लोकेशन को हाइड कर दें। एंड इफ यू लुकिंग फॉर जॉब, अप्लाई टू अ टन ऑफ जॉब। और आपकी ये जो भी आपकी नीश है, इफ यू आर मार्केटिंग एनालिस्ट, तो मार्केटिंग की जॉब्स अप्लाई करें। सप्लाई चेन है तो सप्लाई चेन, दीज आर लिटिल बिट डिफरेंट बाय द वे, सप्लाई चेन इज डिफरेंट देन मार्केटिंग। But again, try to find out a niche, use ChatGPT, and I think you should be able to do that. थोड़े से bullet points add कर ले। कौन सा profile हमने देखना है आगे? मेरे पास I am not able to find any more profiles. I just sent you in the most recent chat, I sent you 2 profiles. Okay. Scroll all the way down. ये मेरे अगर आपको screen नजर आ रही हो, मैं at the bottom of it. Okay, just type in I'll just dictate it to you. So in the address, just type Amna G Usmani. Amna. In the address, I'll just give you the address, right? So ये Amna जी. no, just in the address, the linkedin.com/in/ Okay. Amna G Usmani. AMNA G. एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, आपसे क्विक क्वेश्चन है, इफ यू आर एबल टू आंसर। अभी आपने मेरा प्रोफाइल भी किया नवाब अली का, जिसमें आपने मार्केटिंग एनालिस्ट और सप्लाई चेन का बताया था, आई नीड टू फॉलो नीश। जी अच्छा, जी। आई हैव जस्ट मूव टू कनाडा लाइक 3 वीक्स बैक, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है लाइक 10 इयर्स का यूएई का ही है, तो मैं वो सारी लोकेशंस हाइड कर दूं? लोकेशन हाइड कर दे, आप कनाडा में लैंड हो गए ना, जस्ट जी से दैट। जी। एंड इफ समबडी आस्क्स यू इन एन इंटरव्यू, से कि मैं यहाँ पे आया, कोई बहुत मतलब इनक्विजिटिव होके आपसे पूछता है, तो उसको तब बताए कि हाँ यार वो मैं तब यूएई में था, लेकिन ट्राई टू मेंशन कि जी मैं ये ग्लोबल कंपनी थी और यहाँ पे कनाडा में, यूएस में भी ऑफिस थे। ठीक है, मैं अब आई एम ट्राइंग नॉट टू हाइड एनीथिंग, ठीक है, पीपल विल होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर इट कि जी आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन आप एक नए एरिया में है, मैं आए हैं, तो बेटर है कि आप उनको ये बताएं कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ काम करता था जिनके global offices हैं, they have got office in Toronto and Vancouver or United States of America and everything, and ओके try not to mention too much of areas which are not relevant to Canada. ये ओके। प्रोफाइल था इसका बता रहे थे। G. Okay, so certified health information manager, so you are you a doctor? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं क्लिनिकल डाटा मैनेजर हूँ जी और जी। मैं सर्टिफाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लाइक बैक एंड पे जो काम करते हैं नर्सेज और फिजिशियंस के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कोडिंग, बिलिंग, प्राइवेसी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि मैं मिडिल ईस्ट या अमेरिका में भी जॉब ढूंढ रही हूँ करंटली। तो आप मेरा प्रोफाइल काइंडली अगर मुझे बता दें कि इज इट सुटेबल फॉर दोज टू प्लेसेस, और even I am looking in Canada also because it's my contract job सिक किड्स में। तो मुझे यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ। आप अगर, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कनाडा में हैं ऑलरेडी ना, तो मिडल ईस्ट को टारगेट करने के बजाय ना, मिडल ईस्ट में बहुत लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, वो जो है ना, दे लाइक दे हैव अबंडेंट रिसोर्सेज देयर। योर वैल्यू प्रोपोजिशन है, आप ऑलरेडी कनाडा में, राइट? तो आप कनाडा से यूएस मार्केट को एक्सेस करें, एंड यूएस मार्केट के अंदर आप, आई थिंक यू शुड बी एबल टू फाइंड वर्क। हैव यू अप्लाइड टू जॉब्स, लाइक अ लॉट ऑफ जॉब्स? जी जी, मेरा एक्चुअली 2 बहुत सक्सेसफुल इंटरव्यू हुए यूएस में। एक जी बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, एक जी। रजिस्ट्री पार्टनर, बट अगेन जो इशू था वो वीजे का था। एंड आई एम नॉट लाइक, कोई मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हाउ शुड आंसर द क्वेश्चन अबाउट वीजा इन यूएस, क्योंकि ये जो मेरी फील्ड है इट्स लाइक, और ये मेरी सर्टिफिकेशन इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल इन अमेरिका। हमारा चिम और उनका अहिम जो है, दे बोथ आर सेम इंटर कन्वर्टेबल। तो मुझे, मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हेन आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन कि आर यू विलिंग टू, लाइक वो जो वीजे का एक क्वेश्चन होता है कि मुझे तो वीजा नहीं यूएस का चाहिए, जस्ट वांना डू द जॉब देयर, क्योंकि उनकी मार्केट भी बड़ी है। Amna, are you a Canadian citizen, right? जी 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 जी, बिल्कुल। So then all you need to let them know is I don't need any sponsorship. All you would need is a offer letter from them. ओके। You are under NAFTA, so you would go on a TN visa, and you will just, basically at the border when you go in, you say, hey, this is my job offer letter, and at the border or at the immigration, they'll issue you a TN visa.
which you would have to do. So you don't need to tell your employer that you're looking for sponsorship. You just let them know I'm a Canadian citizen. Even if they ask them, you don't even mention that. Once you get the job, you go out to the border, get the paperwork, and you are just there. So Let me I make don't. it more easy. So absolutely is right. Rafael, was that you, right? Yep. ओके या सो राफेल इज एब्सोल्युटली राइट टीएन वीजा आपको अलाउ करता है वर्क ऑथराइजेशन जहां तक मुझे पता है वर्क ऑथराइजेशन आपको बैठ के 1 साल के लिए एवरीथिंग कितने अरसे के लिए आप कैनेडियन सिटीजन जाके यूएस में काम कर आपको एक्चुअली ऑन्टेरियो मार्क ही नहीं करनी चाहिए लोकेशन आपको अपनी यूएस ही मार्क करनी चाहिए लोकेशन ठीक है आपको वर्क ऑथराइजेशन नहीं चाहिए वहां पे काम करने की आप अपनी लोकेशन मार्क करें न्यूयॉर्क या जहां भी आप कभी गई हो या जो भी लोकेशन आपने आपको कोई रिलेटिव है जी यूएस की जी लोकेशन मार्क करें यूएस की लोकेशन मार्क करके टन्स ऑफ जॉब्स पे अप्लाई करें एंड व्हेन दे विल आस्क यू कि डू यू नीड एनी टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप से नो do you have the work authorization to work in the US say yes and apply to हम्म those jobs and whenever say they say कि जी कोई documentation दे तो उनको कहो जी मैं Canadian citizen हूँ and here's my documentation they understand it ठीक है तो ये तो मसला ही आपका तो इशू ही नहीं है कोई इशू ही नहीं है आपको तो आपने वर्क ऑथराइजेशन आपके पास है टीएन वीजा आई थिंक होता है वो लगवा लें आपको एंड यूर वर्क ऑथराइज्ड टू देयर आपका मुझे जो समझ में आया आपने कहा जी आपने 2 जॉब्स आपको इंटरव्यू हुए थे लेकिन नहीं हुआ 2 इज नॉट अ बिग नंबर ठीक है हाँ अगर आपने कोई आप 15-20 इंटरव्यूज हो गए होते ना जॉब दे वुड हैव कुड हैव बीन एन But he इशू asked me this question, do you need sponsorship? And I said yes, because I ओह thought that I do need a sponsorship. I don't technically know the difference between, क्योंकि TN N1 भी तो मुझे तभी मिलेगा, I will get that when I will get the job offer. But job offer, isn't राफेल it bound with each other? राफेल कैन यू टेक दैट Usually, Amna, I think this is more becoming of an immigration. I think we need to wrap up the session, but general Okay. advice for you is when your employer asks for you, do you need sponsorship? Your primary objective is getting the job. Once you get there, and if you really want to, depending on what you actually want, if you want the citizenship eventually or the green card, then you might have to eventually ask them or for a sponsorship later. But if your primary goal right now, and depending on most of the people actually don't prefer US citizenship because then wherever they go, they have to be a tax resident as well. So you can, if your ultimate, I know a lot of people who have been working for the last 10 years in US on TN visa. So you just need to go every few years or a year just to go at a border, renew it. So and you can easily do that. So if somebody's asking you, do you need a sponsorship? Basically, they're rejecting you right there and then Oh, okay. at that question. So just let them know you don't need any sponsorship. Once you get the offer letter, you can go, and if they ask you during the interview process, you say, hey, I don't need a sponsorship right now. I'm in Canada, but I can come to US anytime without any need for sponsorship, and just leave it at that. All right. We are actually out of time till Okay, let's do Haseeb's because Haseeb has been waiting for a while. So if you can quickly do Haseeb on, and then we can wrap this up. can you send the profile again Yeah, just type in Haseeb Daniel, just uh, one word, HASEEBDANY, no Y, there's no I. Yeah, Dan YAL. that's it okay here we are एक मिनट ये आ गया यहाँ पे प्रोफाइल It's H Daniel, he's saying, not Hasib Okay. Daniel, H Daniel. Oh, my bad, my bad. No problem. Okay, I build design teams and products. Building high performance design team, the ship highly engaging. Is that million? Is that trillion products and experiences? I'm not sure. Are you a designer, like a UI UX designer, Hasib? Okay, so if you are a UI UX designer, ना this is fine. यहाँ टाइटल में ना यहाँ पे लिखें UI UX designer, ठीक है? So I'll give you example. Products are physical products as well as software products, right? So we are not sure what type of products do you design, right? So write down UI UX designer because that is your keyword.
and I'm assuming that UI UX is your keyword. ठीक है? UI UX is your keyword. Product discovery is your keyword. Product prototyping is your keyword. And I guess this ton like Figma and Photoshop and all of those things in which typically UI UX developers work. ये सारी चीज MVP development is your keyword. ठीक है? ये सारे keywords हैं UI UX के. So and then use these to find like 50 other keywords using ChatGPT as we discussed. तो आपका ये टाइटल जो है ना ये क्लियर नहीं है, ठीक है? इसको क्लियर कर लें, आई थिंक यू शुड बी गुड. और बाकी आपने अपना पोर्टफोलियो वाला साथ अटैच किया हुआ है, तो आई एम गेसिंग के आपने अपना काम वाला साथ अटैच किया हुआ है. यस, यू हैव ऑलरेडी डन इट. बेहतर ये भी होगा कि आप यहाँ फीचर्ड में भी डाल सकते हैं. यहाँ ना फीचर का एक सेक्शन होता है. यूआई यूएक्स इज एवरीथिंग अबाउट विजुअल, ठीक है? तो विजुअल चीजों को आप यहाँ पे फीचर्ड में ना अपने डिजाइन को डालें, ठीक है? फीचर्ड का एक सेक्शन होता है यहाँ पे व्हेन यू एडिट योर प्रोफाइल. बाकी आपकी प्रोफाइल इज फाइन. यूआई यूएक्स का बहुत काम है बाय द वे, डिजाइन का तो बहुत काम है. I think that's about it. Thank you so much everybody for taking the time out. Thank you Rafael and Shireen for setting this up. Hopefully this session was useful. Let me know if I can be of help further. Thank you very much. Actually, I think it was a great session. We went over more than 20 plus profiles. I'll get the number later on. And, we look forward to the next session from on. Thank you so much, Shireen. And one last question: can you just make whenever you post this video, just make it session 2 so that we can create a playlist out of it, right? Because in order we want to go through this activity, there'll certainly be further follow-up sessions as well to this. तो ताकि एक पूरे playlist सी बन जाए, session 1, session 2, session 3, and hopefully that can help people. Sure, we'll do that. Thank you so much, everybody. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.